बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे सलाम सिंध, नए जज़्बे सां, नई उम्मीद सां ऐं नए बलबले सां ऐं ख़ासि तौर ते सुठियुनि ॻाल्हियुनि सां अॼु वरी असां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़ुर थी विया आहियूं। मूंखे चवंदा आहिनि इरशाद जागीरानी, उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं कामयाबीअ तरफ़ रवां तव्हां हूंदो। कामयाबी हासिल करण जे लाइ हर माण्हू जतन करे थो, हर माण्हू पंहिंजे वित वस आहिर कोशां आहे, हर माण्हू जुस्तजूअ में आहे, हर माण्हू मगन आहे, हर माण्हू पंहिंजे कमकार में जुंबिजी वञे थो। पर कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो केतिरियूं ई कोशिशूं कजनि थियूं ऐं केतिरो बि कमकार कजे थो, पर पोइ बि नाकामी पले पवे थी, नाकामी नसीब थींदी आहे। सो जेकी दोस्त नाकामियुनि जो शिकार मुसलसल रहिया आहिनि उन्हनि खे आउं गुज़ारिश कयां थो त ईअं नाहे त मुसलसल नाकामी तव्हांजी कामयाबीअ जी राह में रुकावट आहे। हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो ईंदो, हिकिड़ो ॾींहुं ज़बरदस्त ईंदो जो तव्हांजा पुराणा जेकी बि किसा आहिनि या पुराणा जेकी बि तव्हांजा मामला आहिनि उहे समूरा मामला सुठे नमूने सां तरतीब सां हल थी वेंदा ऐं तव्हां हिकु ॾींहुं सोभ माणींदो। सो मुसलसल जिदोजहद कंदा रहो, पंहिंजे कम सां कमु रखंदा कयो ऐं चुपड़ी करे कमु कंदा कयो। सची ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां हिकु ॾींहुं ख़ासि तौर ते जॾहिं ख़ासि तौर ते थींदो ईअं जॾहिं तव्हां सुरखरू थी वेंदो, जॾहिं तव्हां कामयाबु थी वेंदो त पोइ माण्हू तव्हांखे मुबारक बि ॾींदा, पोइ माण्हू तव्हांजे हक़ में बि हूंदा, माण्हू तव्हांजा ख़ुशामदी बि थींदा, माण्हू तव्हांजा वर्जला बि थींदा, माण्हू तव्हांखे गॾु वठी हलंदा, माण्हू चवंदा इहो असांजो यार आहे, इहो दोस्त आहे। सो बहरहाल कामयाबी जे लाइ तव्हां चुपड़ी करे पंहिंजो कमु कंदा रहो ऐं हिकु ॾींहुं बाक़ाइदा मुल्क में शोर थी वेंदो ऐं माण्हू चवंदा त यार हीउ वाह जो कमु करे वियो, कीअं करे वियो का ख़बर ई न आहे, असां त हिनखे ॾिसंदा ई न हुयासीं, अचानक सां आयो ऐं अचानक सां तहलको मची वियो। सो तहलके जे लाइ महिनत जारी रखो, इनशाला कामयाबी तव्हांजा क़दम चुमंदी। कामयाबी मिले पई जो बाइडन खे, इहा ख़बर पई आहे ऐं अमरीकी जेका आहे सा जेका अमरीकी चूंड आहे, जेकी अमरीकी इंतिखाबात आहिनि उन में डोनाल्ड ट्रंप जो चहिरो लथल आहे कल्ह खां वठी इल्ज़ाम तराशी बि शुरू थी वई आहे। ख़ासि तौर ते रिपब्लिकन पार्टी जो उमेदवार आहे डोनाल्ड ट्रंप साहिबु ऐं डोनाल्ड ट्रंप साहिबु चवे थो त धांधली कई वञे थी, डेमोक्रेटिक पार्टी वारा पाण खे खटाइण जे लाइ मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते धांधली कनि पिया। सो धांधली त पाण पाकिस्तान में घणे भाङे इहो लफ़्ज़ ॿुधो होसीं, पर हाणे अमरीका में बि इहो लफ़्ज़ आम थी वियो आहे त धांधली थिए पई। बाबा थींदो असां वटि ईअं आहे अक्सर, जेको ख़ासि तौर ते जेकी माण्हू दानिश्वर आहिनि, जेकी माण्हू सहाफ़ी आहिनि, जेकी सियासी तजिया निगार आहिनि या जेकी बि थोरी थकी ॼाण रखनि था, उहे अक्सर इहो ई चवंदा आहिनि त जॾहिं बि धांधलीअ जो क्लेम ईंदो आहे, जॾहिं बि धांधलीअ जो ब्लेम ईंदो आहे त पोइ हिकिड़ी ॻाल्हि ज़हन में ईंदी आहे त जेका टीम या जेका पार्टी सोभ न माणे सघंदी आहे उहा इहा इल्ज़ाम तराशी कंदी आहे पंहिंजे पाण खे बचाइण जे लाइ, पंहिंजी इज़त खे बचाइण जे लाइ। सो डोनाल्ड ट्रंप साहिब खे छा थो थिए हाणे ख़बर नाहे छा थींदो। सो बहरहाल सरसी जेका हासिल आहे उहा हिन वक़्तु जो बाइडन साहिब खे आहे। जो बाइडन जा जेके हिमायती आहिनि उन्हनि बाक़ाइदा जशन जूं तयारियूं करे छॾियूं आहिनि। हीअ इलेक्शन ॾाढी टफ आहे, हिन इलेक्शन जा सरकारी नतीजा अञा न अची सघिया आहिनि, छो त हिन इलेक्शन जा सरकारी नतीजा थोरी देरि सां ई ईंदा, छो त हीउ जेको कांटेदार मुक़ाबिलो आहे या सिंधीअ में खणी चऊं त चोटी वारो जेको मुक़ाबिलो आहे, डोनाल्ड ट्रंप साहिबु जेको सदर रही चुको आहे ऐं ख़ासि तौर ते सदारती उमेदवार सां जो बाइडन जी जेका आहे सा हिकिड़ी तरतीब जुड़ी आहे हिन भेरे। सो हिन भेरे जो बाइडन साहिबु सरसी हासिल करे थो ऐं मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन्स सां नतीजा जेके मिलनि था त काफ़ी वोट उनखे वधीक मिलिया आहिनि ऐं जेकी उन जा हिमायती आहिनि उहे बाक़ाइदगीअ सां शहरनि में ऐं रोडनि रस्तनि ते हींअर ई उन्हनि धमालूं हणणु शुरू कयूं आहिनि, छो त गैर सरकारी नतीजा अचणु शुरू थी विया आहिनि मुख़्तलिफ़ पोलिंग स्टेशन्स खां। सो हिन भेरे सदर जेको आहे सो डोनाल्ड ट्रंप हाराइजी वेंदो। उन जा असर पाकिस्तान ते कहिड़ा पवंदा, उन जा असर इंटरनेशनली ॿियनि मुल्कनि ते कहिड़ा पवंदा, छो त अमरीका हिकिड़ो सुपर पावर मुल्क लिखियो वञे थो। उन सुपर पावर मुल्क में हाणे जेका तब्दीली अचे थी आहिनि त ॿई अंग्रेज़ गोरा ऐं जीअं सदर ओबामा कारे नस्ल जो सदर हुयो, हिन भेरे वरी थोरी तब्दीली आहे त ॿई गोरा जेके आहिनि से उमेदवार आहिनि ऐं ॿिन्ही गोरनि मां हिकिड़ो गोरो यकीनन अमरीका जी हाकमियत संभालींदो ऐं अमरीका जो वाइट हाउस कंहिंजो मुंतज़िर आहे। अमरीका जे वाइट हाउस में कंहिंजी फैमिली वेंदी, केरु उते रिहाइश पज़ीर थींदो, केरु उते मुक़ीम थींदो, उहो अहवालु उहा ॻाल्हि तव्हांखे कुझु ॾींहंनि में ख़बर पइजी वेंदी। ॿी तव्हांखे वरी ॻाल्हि ॿुधायूं त कराची में पोलियो जी मुहिम जो आगाज़ थी वियो आहे ऐं अॼु खां पोलियो वारी मुहिम जेका आहे सा बाक़ाइदगी सां जारी आहे। तव्हांखे गुज़ारिश इहा कयूं था त पंहिंजनि ॿारनि खे पोलियो जा क़तरा पीआरियो ऐं पंहिंजनि ॿारनि खे माज़ूरी खां बचायो ऐं तव्हांजे मुस्तक़बिल जा जेकी महिमार आहिनि, जेकी तव्हांजा भरिजल आहिनि, जेकी तव्हांजे मुस्तक़बिल में तव्हांजे कमु ईंदा, तव्हांखे आथत ॾींदा, तव्हांखे टेको ॾींदा ऐं उन्हनि ॿारनि जो मुस्तक़बिल बचाइण जे लाइ
तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश आहे त तव्हां सभई पोलियो वारे टीम सां सहकार कयो ऐं पोलियो जा क़तरा सभिनी ॿारनि खे 5 सालनि जा जेके ॿार आहिनि उन्हनि खे पीआरणु इंतिहाई लाज़मी आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि वरी तव्हांखे ॿुधायां त कोरोना जे हवाले सां अॼु ख़बर पई आहे, थोरी देरि पहिरियां मूं बि जॾहिं टीवीअ जो दीदार कयो, टीवीअ ते कुझु ख़बरूं ॿुधियूं पए त उन मां अंदाज़ो थियो त कोरोना वायरस तेज़ीअ सां पखिड़िजी रहियो आहे। असां जेका पहिरियां मुहिम हलाई हुईसीं या पाण जेका सख़्ती कई हुई असांजे मथां सिंध हुकूमत, उन सख़्ती जो नतीजो इहो निकितो जो इलाही केसिस ते कंट्रोल थी वियो। हाणे वरी ॿुधूं था त कोरोना वायरस तमामु तेज़ी सां पखिड़िजी रहियो आहे। गुज़िरियल 24 कलाकनि में इंतिहाई अफ़सोस सां चवणो पवे थो त असां एतिरी लापरवाही करे चुका आहियूं। गुज़िरियल 24 कलाकनि में 24 मरीज़ फोत थी चुका आहिनि, गुज़ारे विया आहिनि ऐं कोरोना वायरस जे इन मर्ज़ सबबु गुज़ारे विया आहिनि। सो जेकी एक्टिव केस आहिनि उहे बि तमामु घणा आहिनि। एक्टिव केस जेकी घुमंदड़ फिरंदड़ केस जिन खे पाण चऊं था, जिन खे पाण खे बि ख़बर न आहे या जिन खे ख़बर आहे त उहे अस्पताल दाख़िल आहिनि, पर उहे एक्टिव आहिनि, उहे कंहिंसां बि जेकॾहिं हथु मिलाइनि था, कंहिंसां बि वेहनि था या कंहिंसां बि कचहरी कनि था त ज़ाहिर आहे वायरस इहो पखिड़िजे थो। सो महिरबानी करे इन बीमारीअ खे जेका तेज़ीअ सां लहर वरी ॿीहर शुरू थी वई आहे ऐं ॿीहर जेका लहर आहे उहा अॻी लहर खां वधीक मूंखे त तेज़ीअ सां नज़र अचे थी, छो त गुज़िरियल 24 कलाकनि में जेकॾहिं एतिरा माण्हू मरी विया आहिनि, 24-25 माण्हुनि जो जेकॾहिं मौत थिए थो त इहा वॾी ॻाल्हि आहे, इहा अफ़सोसनाक ॻाल्हि आहे, इहा लापरवाही पाण खे तव्हांखे असांखे न करणु घुरिजे। सो महिरबानी करे हाणे वरी तव्हांखे गुज़ारिश कयूं था अदब जा हथ वधी करे त पंहिंजो ख़्यालु रखो, पंहिंजी फैमिली जो ख़्यालु रखो, पंहिंजे बुज़ुर्गनि जो ख़्यालु रखो ऐं ख़ासि तौर ते पंहिंजे नंढड़नि पितकड़नि ॿारनि जो ख़्यालु रखो। ऑफिस जेकॾहिं तव्हां आहियो, ऑफिस में कमकार कयो था त पंहिंजा जेके हथ आहिनि उहे साफ़ु रखो ऐं जॾहिं मोटी अचो था, अॻे जीअं पाण एहतियात कयूं पिया त मोटी अचूं पिया त पाण दरवाज़े ते ई बीही करे पंहिंजी जेका आहे सा रफ ड्रेस जेका आहे सा या घर वारी जेका ड्रेस आहे उहा तब्दील करे छॾींदा हुआसीं ऐं हथ सैनिटाइज़र सां या साबुण सां या वरी डिटोल सां पाण साफ़ु करे पोइ वरी पंहिंजनि ॿारनि सां वञी मिलंदा हुआसीं या उन्हनि खे छुहंदा हुआसीं या उन्हनि सां प्यारु कंदा हुआसीं। सो हाणे इहे समूरियूं ॻाल्हियूं वरी तव्हांजे ज़िंदगीअ में मामूल जो हिसो थी वञनि ऐं वरी तव्हां थोरी एहतियात जेकॾहिं कंदव त इहा ॾाढी ख़तरनाक बीमारी आहे कोरोना। ऐं जेकी दोस्त इन बीमारीअ जे बारे में अञा ताईं चवनि पिया त इहा बीमारी न आहे, उन्हनि खे इहो अंदाज़ो ई कोन्हे त इहा बीमारी इंतिहाई ख़तरनाक आहे। जेकॾहिं तव्हां टीवी ॾिसंदो, जेकॾहिं तव्हां रिपोर्ट ॾिसंदो WHO जी, त उन मां बि तव्हांखे अंदाज़ो लॻी वेंदो त इहा बीमारी केतिरी ख़तरनाक आहे। एतिरा माण्हू 24-25 माण्हू 24 कलाकनि में जेकॾहिं गुज़ारे वञनि था त इहा वॾी हैरत अंगेज़ ॻाल्हि आहे ऐं वॾी अफ़सोसनाक ख़बर आहे। ऐं उहे असांजा साथी जेकी संगती बिल्कुलु लापरवाही जो मुज़ाहिरो कनि पिया, उन्हनि सभिनी खे गुज़ारिश आहे त महिरबानी करे पंहिंजो ख़्यालु रखो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखण सां तव्हां आसपास जो ख़्यालु रखी सघंदव, पंहिंजे मुआशिरे जो ख़्यालु रखी सघंदव, पंहिंजे घर भातियुनि जो ख़्यालु रखी सघंदव। सो इन ॾिस में वरी आउं तव्हांखे गुज़ारिश कयां थो त ख़ासि तौर ते पंहिंजे नंढनि ॿारनि जो ख़्यालु रखो ऐं ऑफिस खां जेकॾहिं मोटो था त जल्दीअ में उन्हनि खे पाण ॾांहुं न सॾायो ऐं उन्हनि सां प्यारु जल्दीअ में न कयो। सो महिरबानी करे पंहिंजो पाण खे साफ़ु रखो ऐं पंहिंजे पाण खे जेकॾहिं बहितरु रखणु चाहियो था न सिर्फ़ु पाण एहतियात कयो पर पंहिंजनि ॿारनि खे फ्रूट्स बि खारायो ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं तव्हां पाण बि इन मामले में थोरी पंहिंजी डाइट बहितरु कंदो त इन बीमारीअ सां मुहाॾो अटकाए सघिजे थो। जिन जो इम्यून सिस्टम बहितरु आहे, जेकी ख़ासि तौर ते चाक चङा भल आहिनि, जेकी फुर्त आहिनि, जेकी चुस्त आहिनि, जेकी वर्ज़िश कनि पिया ऐं पंहिंजो पाण खे फिट रखनि पिया, उन्हनि ते इन बीमारी जो असरु घटि थिए थो। ऐं जेकी कमज़ोर आहिनि ऐं जेकी बिल्कुलु ई ज़ईफ़ थी चुका आहिनि, उन्हनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखण जी ज़रूरत आहे। सो झूननि माण्हुनि खे, बुज़ुर्गनि खे पाण ॿाहिरि वञण खां थोरो उन्हनि खे बचाइजो ऐं उन्हनि खे घर में ई अहिड़ो एंटरटेन कयो त जीअं हू ॿाहिरि न निकिरनि। अक्सर असांजा बुज़ुर्ग थींदो ईअं आहे त ॿाहिरि शाम जे टाइम ते लॉन में वञी वेहंदा आहिनि या वरी कंहिं पार्क में वञी वेहंदा आहिनि या थोरी चहलकदमी कंदा आहिनि। सो उन्हनि सां तमामु घणो प्यार बि हूंदो आहे। नंढड़ा बुज़ुर्ग वरी ॿारनि सां तमामु घणो प्यारु कंदा आहिनि। सो इन्हनि मामलनि ते थोरी गहरी नज़र तव्हां रखंदो त तव्हांजी वॾी महिरबानी थींदी। अॼु असां जेको प्रोग्राम करण वारा आहियूं उहो ख़ासि तौर ते सहाफ़ती दुनिया में छा पियो थिए, असांजो सहाफ़ी जेको आहे, असांजो ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे सहाफ़ीअ खे कहिड़ा थ्रेड्स आहिनि ऐं सहाफ़त जेका कुझु साल पहिरियां हिकिड़ी ख़िदमत जो नालो हुयो ऐं सहाफ़त जेका कंहिं बि ईअं खणी चऊं त कंहिं बि लालच लोभ खां पाक हुई, उन सहाफ़त खे हाणे छा थी वियो आहे। हाणे मुख़्तलिफ़ दोस्त चवनि पिया, तर्जीह निगार चवनि पिया त हाणे जेकी बि असांजा दोस्त आहिनि, जेकी बि सहाफ़ती पेशे सां वाबस्ता आहिनि, उहे दोस्त जेकी प्रोग्राम कनि था, जेकी सियासी तबसरा थियनि पिया, जेकी मुज़ाकरा थियनि पिया, जेकी ख़ासि तौर ते सियासत जी गहमा गहमी जे हवाले सां ख़ासि प्रोग्राम थींदा आहिनि, उहे सभु प्रोग्राम हाणे रायो आहे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जो त हाणे उहे न आहिनि, हिकिड़ी धुर बणिजी करे प्रोग्राम कया वञनि था। इन जो ख़ासि सबबु छा आहे? ऐं पाकिस्तान में असांजा सहाफ़ी कॾहिं कॾहिं गुम बि थी वेंदा आहिनि, कॾहिं कॾहिं उन्हनि खे प्रेशर बि अची वेंदो आहे। जीअं पाण थोरी ॾींहंनि जी ॻाल्हि कयूं, कुझु ॾींहं पहिरियां जॾहिं कैप्टन सफ़्तर वारो मामिलो थियो, जॾहिं
कैमरा मैन असांजे कंहिं साथीअ जेके CCTV फुटेजिस हथ करे कंहिं चैनल ते हलाया त उहो हमरा ई कुझु कलाकनि खां पोइ खंभिजी वियो ऐं गुम थी वियो। ईअं छो थींदो आहे असां वटि, छाजे करे असां वटि जेकी असां वटि ख़ासि तौर ते जेकी क़ुवतूं आहिनि या जेकी इदारा आहिनि उन्हनि जी हाकमियत सहाफ़त जे मथां ख़ासि तौर ते छो आहे? सहाफ़त जेको आज़ादु पेशो आहे ऐं आज़ादु सहाफ़त जी पाण दावेदारी कंदा आहियूं त असां वटि सहाफ़त आज़ादु आहे, सो आज़ादु सहाफ़त छो न आहे असां वटि? ऐं हाणे वरी उन्हनि सहाफ़ियुनि ते बि पाण थोरी देरि में ॻाल्हाईंदासीं जेकी वरी फेसबुक जा सहाफ़ी थी विया आहिनि, जेकी मोबाइल खणी करे ऐं मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते अची करे का न का शइ रिपोर्ट कनि था ऐं पोइ वरी उहा पब्लिक कनि था, पोस्ट शेयर कनि था, त उन ते बि वॾो बाएताल थिए थो, उन ते वॾो बड़धक थिए थो। सो उहे सहाफ़ी जिन खे अताई सहाफ़ीअ जे नाले सां सॾियो वञे थो, उन्हनि अताई सहाफ़ियुनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं, प्रोफेशनल सहाफ़ियुनि ते बि ॻाल्हाईंदासीं। थोरी देरि में मोज़िज़ महिमान असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदा, मौसीक़ी बि हूंदी, चाह वारियूं कुझु ॻाल्हियूं बि हूंदियूं ऐं थोरी देरि खां पोइ उस्ताद मोहरम नाज़ बि असांखे जॉइन कंदो ऐं कचहरी थींदी, कलाम थींदा। तव्हां सां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। ॾाढियूं सुठियूं कचहरियूं असां कंदा आहियूं ऑफेयर में, सो जेतिरी देरि ताईं तव्हां सां कचहरी करे सघियासीं कंदासीं। उस्ताद मोहरम नाज़ असां सां गॾु आहे, ॾाढो सुठो मौसीक़ार, ॾाढो सुठो रागी। उस्ताद मोहरम नाज़ चांहि जा ॿ टे ढुक तकड़ में थो वणे त जीअं मूं ॾे वारो ईंदो त वरी ॻाल्हाइणो पइजी वेंदो। साईं छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? सरदुआऊं, तबियत ठीकु आहे? मज़े में? वॾी महिरबानी तव्हांजी, लख थोरा, तव्हां क़ीमती वक़्तु सीड़ाईंदा आहियो। ऐं अॼु सिंध जी वॾी ज़बरदस्त हिकिड़ी एक्ट्रेस अदाकारा जंहिंखे PTV ते बि असां ॾिठोसीं ऐं मुख़्तलिफ़ ड्रामनि में जलवा अफ़रोज़ जॾहिं जलवागर थींदी हुई त माण्हू TV ॾिसंदा हुआ। छा त ख़ूबसूरत असांजी एक्ट्रेस कमरुनिसा आकड़ो, उनजी अॼु वरसी बि आहे उस्ताद साईं। जी जी, तव्हांजी फेवरेट अदाकारा हुई, बिल्कुलु हुई, बिल्कुलु। छा त ख़ूबसूरत हुई, जेके बि हुन ड्रामा, छा त उनजी अदाकारी हुई, छा त उनजो अंदाज़, ख़ूबसूरती ऐं तमामु नेचुरल ख़ूबसूरती बि हुई हुनजी। ऐं माई बि ॾाढी बाअदब अख़लाक़ बि हुई, फ्रैंकली वटि मुलाक़ातूं रहियूं हुन सां, बिल्कुलु ॾाढो यानी। पर उनजा मज़ा तमामु घणा हुया उन वक़्तु जॾहिं ही चैनल बि कोन हुया, PTV जो हिकिड़ो दौरु हुयो, तॾहिं छा त हुनजी अदाकारी ऐं छा त हुनजो अंदाज़ ऐं स्टाइल हुयो। सो अॼु हुनजी वरसी आहे ऐं वरसी वारे ॾींहं ते हुनखे यादि कयोसीं। उहो सिकंदर सनम साहिब जी वरसी आहे, जंहिं तेरे नाम पार्ट 2 ठाही, उमर शरीफ़ जो शागिर्दु, तमामु सन्हड़ो हिकिड़ो अदाकार, तव्हांखे यादि ईंदो हूंदो। ॾाढो सुठो। सो तमामु घणो सुठो कॉमेडियन ऐं भारत में वञी हुन करे तमामु घणी कॉमेडी कई ऐं भारत में बि पंहिंजो जेको आहे धाको ॼमायो। कॉमेडी किंग बि रही चुको आहे भारतीय प्रोग्रामनि में। ऐं भारत वारा ईअं ताड़ी न वॼाईंदा आहिनि रूबरू, ईअं को अहिड़े तेड़े ते न वॼाईंदा आहिनि। सो उन्हनि प्रोग्राम जा जेकी जज साहिबान हुया या उन प्रोग्राम जा जेकी शरीक हुया, उतां जा जेका ऑडियंस हुई उन्हनि जी, त उन्हनि बि तमामु घणियूं ताड़ियूं वॼाए सिकंदर सनम खे कई भेरा दाद ॾिनो। सो सिकंदर साहिब जी पंहिंजो वरसी आहे ऐं उनखे बि असां यादि कयोसीं। ऐं उस्ताद अॼुकल्ह हिकिड़ो फ़नकार ॾाढो वायरल थी वियो आहे, वॾी मशहूरी मिली वई आहे। तव्हां वारी ॻाल्हि त सीज़न पंहिंजी हणी वियो आहे। सो आउं त ॾिसां थो मुख़्तलिफ़ वॾा वॾा अदाकार, एजाज़ मंगी साहिब जो उन ते वॾो कालम अची वियो आहे ऐं सुठा सुठा जेके अदाकार आहिनि, फ़नकार आहिनि, उहे बि उन ते तबरा कनि पिया। अच्छा, उन ते कालम था अचनि। असल में तव्हांखे तव्हां जीअं तज़किरो कयो त मां मूंखे काफ़ी ॾींहं मां पंहिंजी फेसबुक पर्सनल मसरूफ़ियात जे करे हिकु ॾींहुं छा तव्हांखे ख़बर हिते मां अची कोन सघियुसि। सो मां फेसबुक खां, सोशल मीडिया खां काफ़ी ॾींहंनि खां कनेक्ट न आहियां, डिस्कनेक्ट मूंखे ख़बर न हुई। बाबा ॻाल्हि इहा आहे त उन फ़नकार खां मुख़्तलिफ़ TV चैनल वारा वञी इंटरव्यू था वठनि। थर जो हिकिड़ो फ़नकार आहे, मुबारक हालेपुट उनजो नालो आहे। अच्छा, आहे थर जो, कलाम बि तर्जुमो थियलु ॻायो अथई, भारत में पहिरियां ॻायो वियो, हम तुम हिकु कमरे में बंदि हो चाबी खो जाए, उहो त पाण वॾे शौक़ सां ॿुधोसीं, वॾो मज़ेदार कलाम हुयो, बॉबी फिल्म जो गानो हुयो। ऐं हाणे वरी सिंधीअ में जॾहिं आयो आहे त तव्हांखे असांखे सभिनी खे वरी जेको आहे कावड़ अची वई आहे। सो असांजा जेके दोस्त आहिनि चवंदा इहो कहिड़ो कलाम आहे, भला बंदि कमरो हुजे, चाबी बंदि गुम थी वञे। सर मां अल्हम्दुलिल्लाह पाण ॾिसो ज़ाहिर आहे म्यूज़िक सां ऐं कंपोज़िशन सां मुंहिंजो वास्तो आहे, मुंहिंजी फील्ड आहे। शेखया साहब जो भंवर भरी आकाश में तक़रीबन किताब पढ़ियल आहे, मां वञी थी अचां। भंवर भरी आकाश शेखया साहब जेको किताब हुयो तक़रीबन मुंहिंजो पढ़ियल आहे, उन में काफ़ी मुंहिंजूं कंपोज़िशन बि आहिनि। अच्छा, अहिड़ा ॿिया काफ़ी अदीब शाइर जी ॻाल्हि थो कयां, हाणे जेके किताबी शाइर जेके आहिनि, हिकिड़ा खे केस्टी शाइर जो थो हुजे न, ॿियो किताबी शाइर जेके अदबी हुन में शुमार थियनि था। ॾिसो हिस्ट्री रही आहे, चाहे उहा फिल्म इंडस्ट्री हुजे, चाहे उहो तव्हांजो जेको आहे, हा इहो ज़रूरु हिकिड़ा दायरा आहे न, उहो काफ़ियो रदीफ़ वज़न बहर। अच्छा,
त उन में मूंखे मां त इहो चवंदी इहो ग़लति आहे जेको आहे सो इन में ॻाल्हियूं थोरी आहिनि की हा बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि मूं चई पए मूं बि इहा ॻाल्हि तव्हांजो ग़लति आहे त मां वरी चयो पंहिंजी ॻाल्हि मूं वारी हेॾे होॾे थी वई आहे लॻे थो ॻाल्हि इहा आहे त हुन में का अहिड़ी ॻाल्हि आहे कोन बंदि कमिरो हुजे ऐं तव्हां ऐं असां गॾु हुजूं कचहरी पंहिंजी हुजे पॉज़िटिव जेकॾहिं वठूं त पाण इलाही सारा कम कयूं था हिते ॾाढा परेशान बि रहूं था जेकॾहिं पाण कचहरी कयूं ऐं उन में इहो बि आहे त बाबा पाण कहाणियूं पढ़ूं किताब पढ़ूं या पाण मुख़्तलिफ़ डिस्कशन्स बि करे सघूं था हिकिड़ो ख़्यालु आहे शाइर जो सर बंदि कमिरो हुजे माण्हू जो इहो तख़यल ईअं बि वञे थो त मां उन में पंहिंजे अलाह सां जेको आहे कनेक्ट आहियां चाबी बि गुम थी वञे उन ज़िक्र में ईअं बि छो था नेगेटिव अली मोहम्मद ओडेराई साहिब जो कलाम अथव सर अली मोहम्मद ओडेराई साहिब जो सर कलाम न नेगेटिव छो था वञूं असां माना जी तरफ़ चऊं था त नेगेटिव वञण जी बहरहाल ज़रूरत पाण नाहे। वेठा आहियूं उस्ताद जेकॾहिं इहो कलाम का छोकिरी ॻाए आहे का ख़ूबसूरत छोकिरी ॻाए आहे त वॾो मज़ो वठूं आहे कलाम जो बस बेटा पोइ नेगेटिव चई सघूं पिया वरी बि चलो की यार हमरा शफीरुल मक्ता फोटो असल में छा आहे त हुनजो जेको मुहांडो आहे अलाह साईं ख़ैर सां हुनखे सिंधी सैले में असल में छा आहे त उहो थोरो एजिड बि आहे ऐं ॿ टिनि एकड़नि में हुनजो मुंहुं पकड़ियल आहे ॿियो वरी शेपर आहिनि हुनखे थोरा सा माना थोरो स्टाइल शेपरनि जो सिंधी सैले में चेंज आहे ऐं हिन उमिरि में वरी हुन अहिड़ो कलाम ॻायो आहे त इन जे करे माना हिन दफ़े जेका राग जी सीज़न आहे उहा बराल हणी वियो आहे सर किशोर कुमार ही केॾी एज में जेको आहे सो ॻाल्हाए पंहिंजो रफ़ी साहब जा खोड़ा ॻायल गाना आहिनि या मंज़ूर साहब हींअर ताईं बि काफ़ी अहिड़ा कलाम अचनि इहे कोन्हे को सर बहरहाल साईं उहे प्लेबैक सिंगर हुया आज़र साहब जो त उन्हनि जे बारे में ॻाल्हायो त मां ठा न कंदोमांव तव्हां हाणे सही ही वरी फोक सिंगर चई सघूं था मां थोरो ॿुधो सो बहरहाल ॻाल्हि इहा आहे उस्ताद ईअं कचहरी पाण कयूं पिया हिकिड़ी कंपोज़िशन तव्हां थोरी देरि पहिरियां ॾाढी सुहिणी पे ठाही ऐं उस्ताद तव्हांजो मां सम्झां थो त जेको कलाम तव्हां ॻायो पिए त तव्हांजे वाले साहिब जी शाइरी हा आहे मां तव्हांखे बि इहो ज़िक्र कयो बाबा साईं मूंखे सपोर्ट बि म्यूज़िक में बाबा साईं घणी रही जो अलाह जे करम सां जिन मंज़िल ते आया तव्हां सां गॾु वेठा आहियूं हेॾे वॾे चैनल ते हीअ शाइरी बि मुंहिंजे बाबा साईं जी आहे ऐं मां हिकिड़ो पंहिंजी कंपोज़िशन में बालक खां गानो ॻारायो हो मुंहिंजा सुहिणा सनम रखई मौला बरम छा त मोहणो मिसल महताब हुआ जानी तुंहिंजो वाह जो तुंहिंजो शबाब आहे उहो बि काफ़ी मशहूरु थियो उहा बि कंपोज़िशन उहा शाइरी बाबा साईं जी हुई सो हीअ बि शाइरी बाबा साईं जी आहे ऐं कंपोज़िशन ही फोक आहे असांजी प्योर ऐं काफ़ी पुराणी आहे छो जो बाबा ॻाईंदो आहे पर मां हिनखे थोरो यानी अल्ट्रेशन खणी चइजे कंपोज़िशन जे अंदरि कई आहे पोइ मूड हुजे त ॿुधायां बि आहे न त पोइ वरी ब्रेक जे वेंदासीं जीअं हुकुम कयो न ॿुधायो कलाम ॿुधायो तुझे दर खे छॾे मां काॾे वञा तुझे दर खे छॾे मां काॾे वञा थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा ओ मुंहिंजी पूरी नाहे थी आस वञा तुझे दर खे छॾे तुझे दर खे छॾे मां काॾे वञा थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा ओ थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा तुंहिंजे दर खे छॾे ओ जानी तोखे छॾे मां काॾे वञा थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा ओ थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा तुंहिंजे दर खे शम्मा विंदो कीअं परवानो तो सिवा ही ज़हर ज़मानो छॾे शम्मा विंदो कीअं परवानो ओ छॾे शम्मा विंदो कीअं परवानो परवाज़ नाहे
थियो साह अञा परवाज़ नाहे थियो साह अञा तुंहिंजे दर खे छॾे मां काॾे वञा ओ जानी तोखे छॾे मां काॾे वञा तुंहिंजे दर खे छॾे तुंहिंजे दर खे ओ तुंहिंजे दर खे छॾे मां काॾे वञा थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा तुंहिंजे दर खे छॾे बहादुर आसी तुझे अपना रे जिया जग में जानी तो सहारे बहादुर आसी तुझे अपना रे जिया जग में जानी तो सहारे हो जिया जग में जानी तो सहारे इहा शायद खबर तोखे नाहे अञा इहा शायद खबर तोखे नाहे अञा थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा तुंहिंजे दर खे छॾे तुंहिंजे दर खे छॾे मां काॾे वञा तुंहिंजे दर खे छॾे मां काॾे वञा ओ थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा ओ थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा ओ जानी तोखे छॾे सुणा तोखे छॾे मां काॾे वञा ओ थी पूरी नाहे मुंहिंजी आस वञा ओ जानी पूरी नाहे थी आस वञा ओ सुणा पूरी नाहे थी आस वञा वाह उस्ताद वाह मज़ो अची वियो फ्रेश थी वियासीं ऐं ॾाढी सुठी कंपोज़िशन सुठी शाइरी सुठो अंदाज़ सुठो आवाज़ सो नंढड़ी साई वठूं था मोठी अचूं था मुअज़्ज़िज़ महिमान सां तव्हांखे मिलायूं था तव्हां असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन शहानी है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं थोरी देरि पहिरियां जॾहिं प्रोग्राम जो आगाज़ कयोसीं त मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि सां गॾु सहाफ़त जी ॻाल्हि बि कईसीं सहाफ़त जो पेशो जेको ॾाढो ज़बरदस्त पेशो आहे ऐं उन पेशे खे अॼुकल्ह जेकी अताई सहाफ़ी आहिनि उन्हनि थोरो उनजो करैक्टर जेको आहे सो पेशे जो ख़राबु करे छॾियो आहे सो इन हवाले सां पाण अॼु कचहरी बि कंदासीं तव्हांखे चयो होसीं सो मुअज़्ज़िज़ महिमान हिकिड़ो असांखे जॉइन करे चुको आहे वॾी महिरबानी आहे उनजी पाण चेयरमैन आहिनि हम अवाम मीडिया ग्रुप जा इम्तियाज़ अली शेख साहिब उनखे भलीकार चऊं था अस्सलाम वालेकुम साईं वालेकुम साईं कीअं आहियो ठीकु आहियो अल्हम्दुलिल्लाह वॾी महिरबानी देरि कयव पर वरी बि पहुतो तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे कुर्ब अल्लाह साईं कीअं आहियो ठीकु आहियो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जा वॾा एहसान वॾी महिरबानी छा अॼुकल्ह मसरूफ़ियत आहे कहिड़ो कमकार थिए थो सहाफ़त में बस पंहिंजो इदारो आहे रोज़नामा हम अवाम न्यूज़ जो माशाल्लाह अखबार रोज़नामा है उनखे ॾिसूं था NGOs वग़ैरह खे ॾिसूं था अच्छा अख़बार बि हम अवाम जे नाले जी सां हम अवाम नाले अच्छा उर्दू अख़बार आहे उर्दू अखबार सही भला उर्दू अख़बार जो ख़्यालु कीअं आयो ख़्यालु इहो आहे त असां तक़रीबन जेके बि इंसान क़ौम परस्तीअ में भटिजी विया आहियूं त मां जो जेको ख़्यालु हुयो शुरूअ खां त मां हिकु क़ौम बणिजी कमु कयां हा त उन में छा आहे असांजी उर्दू मादरी ज़बान आहे जेके आहे सभिनी खे सम्झाए बि सघूं था तव्हांजी मादरी ज़बान आहे उर्दू न मक़सदु असांजी क़ौम जी पाकिस्तान जी क़ौमी ॿोली आहे उहा क़ौमी ॿोली आहे मुंहिंजी मादरी ॿोली ऐं क़ौमी ॿोली में थोरो फ़र्क़ु आहे जी मक़सदु क़ौमी ज़बान आहे त उन सां मुंहिंजो वरी वधीक लॻाव आहे अच्छा त मां वरी वधीक तरजीह क़ौम खे ॾींदो आहियां अच्छा पंहिंजे मुल्क खे ॾींदो आहियां न की मां पंहिंजी क़ौम परस्तीअ खे सही इंडिया वजाए जो मां सिर्फ़ु चवंदो आहियां त हर इंसान सां कमु कजे सही कंहिं सिर्फ़ु ख़ासि तबिके सां न सही
तव्हां चयो पई माना ईअं खणी चऊं त तव्हां जेको सिंध जा जेके मामला आहिनि उहे उर्दू ॿोलीअ में बि जी हाईलाइट जी जी हाईलाइट थियनि जी मुख़्तलिफ़ बिल्कुलु मामला बिल्कुलु। जेके आहिनि से उहे सिंध सां मसइला आहिनि, पाकिस्तान में हर अवाम सां मसइला आहिनि, हा 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 जिते किथे अवाम सां परेशानियूं, सही 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 इन करे उर्दू सो हिन हुकूमत में त हर माण्हू परेशान आहे सर बिल्कुलु परेशानियूं वधी वियूं बिल्कुलु वधी आहिनि वियूं। ख़ासि तौर ते अख़बारी जेका दुनिया आहे उहे बि अख़बारी परेशानियूं जो शिकार दुनिया आहे। त माण्हू इलाही 90% फायर थियनि था, उन्हनि खे निकाली मिली वई आहे। बिल्कुलु, सो इन ॾिस में तव्हांजो इदारो कीअं पियो हले, सर्वाइव करे थो? सही आहे, मक़सदु नॉर्मल तरीक़े सां हलायूं था, जेकड़ी पोज़ीशन आहे उन हिसाब सां हलायूं था। अच्छा अच्छा जी जी सही 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 पोज़ीशन ते यादि आयो त ही जेकी सदारती इलेक्शन बि थिए थी अमेरिका जी, जो बाइडन साहिबु ऐं डोनाल्ड ट्रम्प साहिबु आम्हूं साम्हूं आहिनि, तव्हां सहाफ़ती राय ॾियो छा थियण वारो आहे, छा उनजो असरु पवंदो, कहिड़ो इम्पैक्ट पवंदो इंटरनेशनली ऐं पाकिस्तान ते ख़ासि तौर ते? पाकिस्तान जो तव्हांखे बि इल्मु आहे त अमेरिका सां जेको बि सदारती इंतख़ाब हूंदो आहे त उन में ज़ाहिर आहे पाकिस्तान वधीक दिलचस्पी वठंदो आहे, छो त मेन जी डीलिंग पाकिस्तान सां आहे। डोनाल्ड ट्रम्प जा तालुकात इमरान ख़ान सां बहितर आहिनि, उन सां बहितर तालुकात आहिनि। पहिरियों बि इमरान ख़ान जी तारीफ़ करे चुको आहे डोनाल्ड ट्रम्प, त इमरान ख़ान बि चाहींदो त अहिड़ो ई हुजे को माण्हू जेको असां सां लह वचड़ में सिधो हुजे ऐं असांजी ॻाल्हि खे बि मञे। सही डोनाल्ड ट्रम्प मञे थो इमरान ख़ान जी ॻाल्हि खे, माना उनजी पसंदि जो लीडर, उनजी पसंदि जो आहे लीडर डोनाल्ड ट्रम्प जी पसंदि जो लीडर जी इमरान जी ख़ान जी साहिबु। जेको असां हिन टेन्योर में ॾिठो आहे इहो। अच्छा अच्छा पाण में हिक ॿिए सां जी राब्तो पाण में हिक ॿिए सां उन्हनि जी हम आहंगी आहे, अच्छा अच्छा जो बाइडन सां मुलाक़ात न नथी थिए। उनजी उन सां एॾी न आहे जेकी डोनाल्ड ट्रम्प जी आहे। सही 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 असांजे मुताबिक़, असांजे पंहिंजे तज़िये जे मुताबिक़। सही 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 बाक़ी हाणे हर इंसान पंहिंजी सोच रखे थो। सो छा था सम्झो तव्हां कहिड़ो सदर असांजे लाइ बहितर रहंदो? ज़ाहिर आहे थोरी चेंजिंग अमेरिका जे अवाम खे बि खपे, हा त उहो चवंदा त ज़ाहिर आहे डोनाल्ड ट्रम्प हटे त जो बाइडन अचे। छाजे करे हटे भला, को हुन में कहिड़ी ख़राबी आहे? इन करे जो हो जेको आहे न हुनखे पहिरियों बि तनक़ीद थी चुकी आहे हुनखे डोनाल्ड ट्रम्प ते, हा हा पंहिंजे अवाम में। तव्हां जॾहिं नओं आयो हुयो वाह। त कहिड़ा मुज़ाहिरा थिया हुया, केॾा मसइला थिया अमेरिका में ई। हा ज़ाहिर आहे अवाम उहा ई थी चाहे त चेंजिंग हुते बि अचे, जीअं असां था चाहियूं असां वटि बि चेंजिंग अचे। सही सही तव्हां पाण ॻाल्हि कई त परेशानियूं आहिनि, हा हा त परेशानियूं त असांजे मुल्क में शुरूअ खां आहिनि न लॻा पिया। भला वाह, इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि ॿुधायव त डोनाल्ड ट्रम्प जा इमरान ख़ान साहिब सां ॾाढा सुठा जी वास्ता जी आहिनि। बिल्कुलु इहा मूंखे बि ख़बर न हुई त इमरान ख़ान साहिब जा डोनाल्ड ट्रम्प सां के सुठा जी जी वास्ता आहिनि। भला वास्ता हा, इहा मूंखे ख़बर तव्हांजी कंहिं लीडर जी न हुई, बसि मक़सदु मां पंहिंजे हिसाब सां त हिकिड़ो इन शइ खे जॉइन कयां त यार हीअ शइ हीअं आहे। सही 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 भला हूअं ज़ाती मसरूफ़ियत में अख़बार खां सवाइ ॿियो कहिड़ो कमु था कयो? जी जी बिज़नेस खे बि टाइम ॾियूं था, हा हा हिनखे बि सहाफ़त खे बि टाइम ॾियूं था। सहाफ़त उहे बि मुश्किल में आहे हिन वक़्तु जो सहाफ़त जी काथे का वैल्यू न आहे। असल में वैल्यू हूंदी आहे माण्हू सां, माण्हुनि पंहिंजनि ई ख़राबु कई आहे हिन शइ खे। अच्छा अच्छा त सहाफ़त हिकु मुक़दस पेशो आहे, सही सही हुन अवामी तर्जुमान आहे, ईअं चइजे न। हा हा त हुनखे मक़सदु हथ सां ख़राबु कयो वियो आहे। हर माण्हू वटि प्रेस जो कार्ड आहे, हा 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 हुनजी का वैल्यू उन्हनि सफ़ा माना दुकानदार वटि वेंदव त बि प्रेस जो कार्ड मिलंदो तव्हांखे, सही सही ठेले वारे वटि वेंदव त बि प्रेस जो कार्ड मिलंदो। त एॾी मक़सदु बददियानती थी वई आहे हिन पेशे में जो मक़सदु सीनियर ऐं जूनियर ई त ख़बर ई कोन थी पए त सहाफ़ी मक़सदु आहे छा सहाफ़त। सही 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 तो हिकु साल खां पोइ सीनियर थी थो वञे माण्हू। बसि ज़ाहिर आहे मक़सदु इहो आहे त साल तव्हां कार्ड रखो हा कंहिं बि इदारे जो, साल खां पोइ ॿियो को तव्हां त सहाफ़ी मिलंदो। हा यार वाक़ई पुराणो आहे। तव्हां भला कॾहिं खां आगाज़ कयो सहाफ़त सर में? मां आगाज़ कयो आहे इहो 2001 खां। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह 2001 त माना इहो 19 साल थी विया जी आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह। मक़सदु हिन 19 सालनि में असां कंहिंखे पंहिंजे हिन पेशे सां कंहिंखे तंग न कयो आहे अॼु ॾींहं ताईं। अच्छा जीअं असां ॿुधंदा आहियूं फलाणे हीअं तंग कयो आहे, असां अॼु ॾींहं ताईं अल्हम्दुलिल्लाह अलाह खे जवाबु ॾियणो आहे। पर असां पंहिंजे बिज़नेस खे बि टाइम ॾिनो आहे त अवामी तर्जुमानीअ खे बि टाइम ॾिनो आहे। सही सही पर जीअं तव्हां ॻाल्हि कई प्रेस कार्ड हर कंहिं वटि आहे त जी उहो जी जी इदारनि जो कमु इहा आहे। शइ न हुजणु खपे। तव्हां जीअं हम आवाम मीडिया ग्रुप सां जी, वाबस्तु जी, आहियो जी। त को दोस्त संगती साथी पोइ चवे थो त पोइ कार्ड जी ठाहे ॾींदा बिल्कुलु हूंदव। न, पर असांखे मुंहिंजो जेको मक़सदु हूंदो आहे भले दोस्त हुजे पर उन खां इन रीति को कमु वठो वञे। मां पुछंदो आहियां भाउ तुंहिंजी दिलचस्पी कहिड़े पेशे में आहे, हा हा उहा दिलचस्पी हुन पेशे में कार्ड जो मक़सदु इहो न आहे त कार्ड ठाहे ॾियां त तव्हां माना ॿार रुगो पुलिस खे ॾेखारींदा वरितो कार्ड। सही सही सम्झो था ॻाल्हि खे। असल तो हक़ीक़त ॿुधायूं, इहा ई हक़ीक़त आहे।
बसि बहरहाल असां छो न ॾिना आहिनि कार्ड, पर अहिड़नि माण्हुनि खे जो अल्हम्दुलिल्लाह जेके ज़िलत जो बाहिस न बणिजनि। सही सही सही। इहा बाक़ी इंसान जी कोशिशि हूंदी आहे बहितरीअ जी तरफ़। अलाह ॿ दोस्त ॾे सुठा ॾे, सही 20 खां बहितर आहे। पाण कचहरी कयूं था, अञा तफ़सीली तव्हांखे कलाम में सुठा ॿुधाईंदासीं। चांहि बि तव्हांजे लाइ अची वई आहे, चांहि पियूं त असां नंढड़ी साई वठूं था। नाज़रीन असां सां गॾु रहिजो। अॼु ॾाढो सुठो असां वटि दोस्त इम्तियाज़ अली शेख साहिबु असांजो महिमान आहे। सो तव्हां जुड़ियल रहिजो, कचहरी अञा कंटिन्यू रहंदी नंढड़ी साईअ खां पोइ। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। खुशहाली है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। इम्तियाज़ अली शेख साहिबु असां सां गॾु आहे, चेयरमैन हवामाम मीडिया ग्रुप जो, ऐं ख़ासि तौर ते वरी उस्ताद मोहरम नाज़ बि असां सां गॾु आहे। सुबुह जो ॾाढो सुठो कलाम असांखे ॿुधाए चुको आहे ऐं मज़ेदार कलाम ॿुधायो अथई। उस्ताद साईं कंपोज़िशन कॾहिं कॾहिं माना अहिड़ी भली था करे हो ऐं माना ईअं असांखे घुमाए था छॾियो। उहो कहिड़ो माना ख़ासि तव्हां वटि को ॾींहुं आहे मुक़ररु या का ख़ासि मूड जो मिदार आहे, कीअं माना थिए थी कंपोज़िशन? हिकिड़ो हाणे कंहिंमें के गेस्ट हुयो न, ॿुधोमांसि हू चवनि पिया त असां ॿुधो तव्हां अक्सर राति जो कंपोज़िशन्स कंदा आहियो रहमान साहिब जो। पोइ हुन चयो त असल में राति जो मां पंहिंजे बेड ते वेंदो आहियां त मूंखे हिकिड़ो कमु त करिणो हूंदो आहे न। सही सही। त पोइ हिकिड़ी आमद हूंदी आहे, उहा थींदी आहे कुदरत जी तरफ़ां। हेॾो टाइम पीरियड आहे कोन, पर इहो आहे जो कमर्शियल अगरि तव्हां मूंखे चवंदो हीअ शाइरी आहे, हिन खे कंपोज़ करिणो आहे, त मूंखे हुनजी फ्रेमिंग ख़बर आहे। अच्छा अच्छा। कंपोज़िशन जा उसूल आहिनि, उसूल आहिनि। ईअं त हर कोई कंपोज़र आहे, फनकार बि पंहिंजे हिसाब सां कंपोज़ कनि था, पर उसूल आहिनि कंपोज़िशन जा। उनजो फ्रेम कीअं जोड़िजे, तलफ़ुज़ खे कहिड़े कहिड़े बीट्स ते मां विहारे सघां थो, या वरी शाइरीअ सां को उहो ई न तलफ़ुज़ जेको बि आहे बिल्कुलु। त शाइरी अहिड़ी आहे त कंपोज़िशन हाणे हिकिड़ो सिंध टीवी ते माशाल्लाह ॾाढो ज़बरदस्त मुंहिंजो रहियो आहे बशीर सोलंकी जी आवाज़ में, दिलबर ख़ुदा जे वास्ते घणो हिट रहियो मुंहिंजी म्यूज़िक में रहियो, सिंध टीवी जी प्रोडक्शन आहे। पर हिकिड़ो ॿियो हुयो जेको तबसुम साहिब शाइरो, हुते स्टूडियो में वेठासीं, हाणे 9 गाना असां करे चुकासीं एल्बम जा, हिकिड़ो गानो बि खुटे पियो ऐं उहो गानो असांखे करिणो तबसुम साहिब जो, जंहिंजो अस्थाई हुई हुन वटि। पोइ हाणे स्टूडियो में अच्छा अच्छा इश्क जो नत अगे मूंखे कहिड़ो पतो, जिंद जली खाक थी खाक उॾरी जॾहिं तॾहिं सांस थियो, तॾहिं सांस थियो। हाणे स्टूडियो अच्छा ही कमर्शियल आहे, कमर्शियल इट मीन्स मार्केट जे हवाले सां ॾाढी सुठी कंपोज़िशन आहे। यानी ही या कंपोज़िशन तव्हां कई आहे? जी जी, कंपोज़िशन म्यूज़िक अरेंजमेंट मुंहिंजी हुई। एट द टाइम होॾे स्टूडियो वेही करे, ठीकु आहे। पोइ ही आहे असांजो, यानी तव्हां चवंदो थी इहो बाक़ी हिकिड़ी आमद जेका उहा अलॻि शइ आहे। सही सही सही। सुहिणी आमद हुई, सुहिणी तो सिवाय रूह मुंहिंजो छोड़ो थो लॻे, बालक जेको मूं ॻाल्हायो सुहिणियूं आमद ई हूंदियूं आहिनि। हा न, इहो शाइरी सुहिणी। हाणे भला छा ॿुधाईंदव असांखे? सर हा, असल में मां असां मंज़ूर साहिब जा वॾा परस्तार आहियूं। अच्छा अच्छा। सो ॿाहिरियां अगरि कुझु कलाम यादि आहे त मंज़ूर साहिब। वाह 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 वाह। साहिब जे हवाले सां जेको कुझु चयो, ॾाढियूं ऑथेंटिक ॻाल्हियूं वाकई आहे, ॿाहिरि थिए थो ईअं, हर भरू कार्ड आहे, वैल्यू ख़राब थो थिए। सो आसरनि में असांखे रुलाए दिला से जहिड़ो दुश्मन कोन्हे, दिला से जहिड़ो दुश्मन कोन्हे, अहिड़ो दिलासो न ॾिजे दिल वारे खे। प्यार कजे रखी पेर पकते अली गुल, प्यार कजे रखी पेर पकते अली गुल, धोखो न ॾिजे पिरी प्यारे खे। ओ आसरन में असांखे रुलाए छॾी, आसरन में असांखे रुलाए छॾी, आसरन में असांखे रुलाए छॾी। इहो छा कई, इहो छा कई, इहो छा कई, इहो छा कई, हुन हाल खां
खां बि विञाए छॾी हुन हाल खां बि विञाए छॾी ओ आसरनि में असांखे रुलाए छॾी इहो छा कई इहो छा कई हुन हाल खां बि विञाए छॾी हुन हाल खां बि विञाए छॾी आसरनि में असांखे रुलाए छॾी वचन वाइदा सभु विसारे छॾी वतन वाइदा सभु विसारे छॾी वचन वाइदा सभु विसारे छॾी वचन वाइदा सभु विसारे छॾी हो वणी असांजा वॼाए छॾी असांजा वॼाए छॾी इहो छा कई इहो छा कई इहो छा कई इहो छा कई हुन हाल खां बि विञाए छॾी हुन हाल खां बि विञाए छॾी आसरनि में असांखे रुलाए छॾी अली गुल जी दिलड़ी दुखाए 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 छॾी हीअ जानी जवानी जलाए छॾी हीअ जानी जवानी जलाए छॾी इहो छा कई इहो छा कई इहो छा कई इहो छा कई हुन हाल खां बि विञाए छॾी हुन हाल खां बि विञाए छॾी आसरनि में असांखे रुलाए छॾी आसरनि में असांखे रुलाए छॾी इहो छा कई इहो छा कई इहो छा कई इहो छा कई हुन हाल खां बि विञाए छॾी 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 वाह साईं वाह उस्ताद मोहरम साईं आउं सम्झी वियुसि त इहो तजो सॼो इशारो जेको आहे न इमरान खान साहब ॾियो आसरनि में असांखे रुलाए छॾी थोरो साहब जे बि ॻाल्हाए जेकी अताई साहब जो इहो छा कई न साईं साईं बिल्कुलु हुन हाल खां विञाए उन छॾी ई ॻाल्हाई वाक़ई ॻाल्हि सॼी साॻी पधरी मक़सदु हुन में ई बयानु थी सो छा था सम्झो अॼुकल्ह जो साहफ़ी पंहिंजूं असुलु ज़िमेदारियूं निभाए थो या छॾे वियो आहे जेका मुक़दस सहाफ़त आहे हुनखे जेको सहाफ़त हिकिड़ो नालो आहे सहाफ़ी सहाफ़ी जॾहिं पंहिंजे पेशे सां मुंसलिक हूंदो आहे त उहो सम्झंदो आहे मुंहिंजे नज़रियो अवामी नज़रियो पेश करिणो आहे मूंखे सहाफ़ी बिल्कुलु आहिनि जिन जे करे हले थो न कमु हर क़ौम में हर पेशे में जेके माण्हू आहिनि उहे पंहिंजे इदारनि सां बि सचा आहिनि पंहिंजे कम सां बि सचा आहिनि त आहिनि बिल्कुलु सहाफ़ी सीनियर असां वटि अहिड़ा वेठा आहिनि जेके मुल्क लाइ बहितर सोचनि था सुठो लिखनि था सुठो ॻाल्हाइनि था बाक़ी लाबी सिस्टम हर इदारे में हूंदो आहे
हर क़ौम में हूंदो आहे, हर शहर में हूंदो आहे, सही हर तंज़ीम में हूंदो आहे। हा हा त ईअं सहाफ़त में बि इलाही लाबी सिस्टम हूंदो, को कंहिंखे सपोर्ट कंदो आहे, को कंहिंखे सपोर्ट कंदो आहे। बाक़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहितरीनु सहाफ़ी मौजूदु अथनि असांजे मुल्क में। सही सही भला हाणे सहाफ़ी थोरा वधी न विया आहिनि अॻे खां? सर इहा ई असल वजह इहा आहे न, प्रेस क्लब ते बि अलॻि अलॻि सिलसिलो थी वियो आहे, हर शहर में ॿ प्रेस क्लबूं थी वियूं आहिनि, दड़ाबंदी थी वई आहे। इहा ई लाबी असां वधी कयूं त हीअ प्रेस क्लब अलॻि आहे, का नेशनल प्रेस क्लब आहे, का ॿी प्रेस क्लब आहे, ॻाल्हि वधी वई आहे। बिल्कुलु ॾाढी वधी वई आहे। ऐं हिनखे काई बि हुकूमत मैनेज बि नथी करे सघे। इहो तॾहिं हिक ॿिए जे कढ काई हुकूमत ईंदी आहे, चवंदी आहे त हे जिन सां वास्ता जेतिरा हूंदा आहिनि हुकूमत उनखे तरजीह ॾींदी आहे। अच्छा अच्छा। बाक़ी त हेठी लेवल ते त जंहिं वटि हीअ मोबाइल आहे उहो सहाफ़ी आहे सम्झो तव्हां। अच्छा अच्छा। जंहिं वटि हीअ आहे हा 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 एंड्रॉइड सिस्टम जंहिं वटि आहे उहो वीडियो ठाहे ऐं शुरू थी था वञनि, पोइ चवनि था असां तूं मीडिया छा आहे, असां मीडिया आहियूं। अच्छा अच्छा। भला हीअ तव्हांखे त 19 साल थी विया आहिनि, 19 साल पहिरियां त हिकिड़ो भरपूर नमूने सां मुज़ाहिरो कयो हूंदो तव्हां पंहिंजी सहाफ़त जो। उन वक़्तु त कैमरा जो वर्क थींदो हो, त हाणे त मोबाइल अची विया आहिनि। सो उन सहाफ़त ऐं हिन सहाफ़त में थोरो फ़र्क़ु महसूसु कयो था? उन हिन में वॾो फ़र्क़ु आहे, ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे उन दौर में ऐं हिन दौर में। उन दौर में ख़ालिस मोहबत मिलंदी हुई सियासतदान में। अच्छा, सियासतदान में? सियासतदान में हिकु मक़सदु मोबाइल न हुई, कैमराऊं त हुयूं न, उहा उन हिसाब सां उहा कवरेज हलंदी हुई। मखसूस सहाफ़ी हूंदा हुया। सियासतदान मां मोहबत अचो, अवाम सां बि मोहबत थी। न मक़सदु सियासतदान जी मोहबत सहाफ़ीअ खे ॾिसी बाबा हीअ सुठी ख़बर हलाए थो, उन महिल सची ख़बर हलंदी हुई। हिन महिल उहा ख़बर न आहे जेकी तव्हां शुरूअ वारे दौर खां। हिन महिल का ख़बर न आहे, हर माण्हू ख़बर आहे। सही था चओ, सही। हर माण्हू हिन महिल ख़बर आहे। उन महिल जेकी ख़बर हलंदी वाकई सियासतदान बि महसूसु कंदो यार हे सहाफ़ी ठीकु आहे, हे ख़बर वाकई कढी अचे थो। सही सही। अॼुकल्ह अगरि को ख़बर कढी बि अचे थो त सम्झो त उनखे बि साइड करे था छॾनि। सहाफ़ी केतिरा मरी विया, केतिरा मारिया विया। सही सही। इहा शइ बि वॾी डेंजरस आहे। जेके पंहिंजे पेशे सां सचा हुआ, पेशे सां जेके सचा आहिनि त उनखे वरी जीअण बि नथा ॾियनि। सही सही। हाणे त वरी एडिटिंग जो ज़मानो अची वियो आहे। अज़हर साहिब बि कल्ह ॻाल्हि कई पई आई त हाणे ख़बर ई नथी पवे, सची ख़बर ते बि माना एतबार करणु ॼण त ॾुखियो थी पियो आहे। तव्हां ॾिसो डॉक्टर ॻाल्हि हिकिड़ी हूंदी आहे, मथां डबिंग ॿी हूंदी आहे। असां चवंदा आहियूं यार हिकु ईअं थी वियो आहे को। सो इहो सिलसिलो हिकिड़ो टेक्निकली थोरो मसइलो थी पियो आहे। मिसाल मां तव्हांखे ॾियां हिकिड़ो, डॉक्टर शाहिद मसूद जी तव्हांखे ख़बर हूंदी, कंहिं चैनल सां मुंसलिक हुयो, उन हिकिड़ी ख़बर हलाई जिते चीफ जस्टिस नोटिस वरितो। अच्छा सर। उहा ग़लति ख़बर वई सॼी। त जॾहिं एॾो वॾो सहाफ़ी, मञियल सहाफ़ी फेक ख़बर हलाए सघे थो त तव्हां ॿिए सहाफ़ीअ मां कहिड़ी उमेद रखंदव? डॉक्टर शाहिद मसूद खां तव्हां पाण वाक़ुफ़ु आहियो। त उन ख़बर पूरी ख़बर जेकी आहे उनजी ग़लति वई कोर्ट में, सज़ा बि पंहिंजी तस्लीम कई। ठीकु। पर इहो आहे त वरी सहाफ़त वारा दोस्त असांजा हिकिड़ो जुमिलो इस्तेमालु कंदा आहिनि, ख़ासि तौर ते ज़रियनि वटां मालूम थियो। पोइ ज़रिया कॾहिं कॾहिं ज़रिया ख़बर ॾेई सघनि, इदारनि जा माण्हू ई हूंदा आहिनि, त पोइ ज़रिया कॾहिं कॾहिं का अहिड़ी ख़बर ॾेई सघनि न। जी जी बिल्कुलु ॾेई सघनि था, लेकिन काफ़ी सारो मां तव्हांजी ॻाल्हि कयां थो, काफ़ी जेके वॾा वॾा सहाफ़ी आहिनि स्पेशली उर्दू मीडिया जा, उहे त उन्हनि जी वीडियोज़ बि लीक थियूं आहिनि मार्केट में, जेके करप्शन जे दौरान यानी जेको आहे सो ऑन द रिकॉर्ड रहियनि ॻाल्हियूं। बिल्कुलु सही था चओ। इंसान जाते सही बि आहे त ताते ग़लति बि आहे, पर जॾहिं तव्हां सभु इशू अवाम ॾाढो रखंदव त तव्हां मुल्क हलाए बि नथा सघो। हाणे छा जीअं चयो न त हीअ पंहिंजो एतबार ई कोन्हे, ख़बर सची आहे या कूड़ी आहे। सही ॻाल्हि आहे। जी जी बिल्कुलु सही। पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेका आम तौर ते ॾिठी वञे थी त सहाफ़ी दोस्त असांजा जेके आहिनि उन्हनि खे का नौकिरी चाकरी बि न आहे, पर पोइ बि ठठ ठांगर में हूंदा आहिनि। इन जो सबबु छा आहे? इन जो सबबु इहो आहे उनखे जुनून आहे, शौक़ु आहे। सहाफ़ीअ खे इदारा सलाम कंदा आहिनि, आम माण्हूअ खे त इदारो अंदरि न घुराईंदो, पाण में वेठा आहियूं। इहो जुनून आहे हर इंसान जो। नंढड़ी साई वठूं था, पोइ मोटी चऊं था कचहरी कयूं था असां। सो वञो केॾांहुं वञा, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध
सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं इम्तियाज़ अली शेख साहिब असां ॾाढी सुठी कचहरी असांजी थी पए हिन वक़्तु असांखे फिशरीज़ जे हवाले सां ख़ासि तौर ते पाण कचहरी कंदासीं उहो डिपार्टमेंट छा पियो करे चेयरमैन आहिनि पाण पाकिस्तान फिशरीज़ एक्सपोर्ट्स जा सो एक्सपोर्ट जे हवाले सां पाण कचहरी कंदासीं अॼु मोज़िज़ महिमान असां सां माना तो साथी गॾु आहे मोहम्मद ज़फ़र कुंडी साहिब उनखे भलीकार चऊं था अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी ठीक है अल्लाह का शुक्र मैंने तारुफ करवाने में कोई गलती तो नहीं की नहीं बिल्कुल यही है ना डिपार्टमेंट आपका बिल्कुल कैसे मिजाज हैं ठीक हैं आप अल्लाह का शुक्र क्या हो रहा है फिशरीज डिपार्टमेंट में आजकल कुछ नया फिशरीज की एक्सपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो एक्सपोर्ट के हवाले से ये है कि पिछले 4-5 साल से माशाल्लाह से हमारी एक्सपोर्ट जो है ना ईयर पर ईयर इंक्रीज़ की है। अच्छा और लास्ट ईयर कोविड-19 के हवाले से जिस तरह जो हालात चले तमाम इंडस्ट्रियाँ इफेक्ट हुई, एक्सपोर्ट पे असर पड़ा होगा, एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। हालांकि हमारा टारगेट था कि लास्ट ईयर इसको जो है ना हम लोग डबल पे ले जाएं, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये हुआ कि इंटरनेशनली प्राइस ड्रॉप हो गए। अच्छा तो उससे जो है ना काफ़ी जो है ना हम इंडस्ट्री मुतासिर हुई। सही लेकिन फिर भी हमने 2018-19 का जो टारगेट था और 2019-20 उसको लेवल पे रखा, यानी नीचे नहीं आने दिए एक्सपोर्ट। अच्छा तो माशाल्लाह एक्सपोर्ट तो हमारी अच्छी रही है, लेकिन इस हवाले से कुछ हर्डल्स हैं, कुछ मुश्किलात हैं। अगर हुकूमत की बैक हो हमारे पीछे सही और थोड़ी सपोर्ट मिले हमें तो हम अपनी एक्सपोर्ट को माशाल्लाह जो है ना दूसरी इंडस्ट्रियों से कई गुना आगे ले जा सकते। वफाकी हुकूमत की या सिंध हुकूमत की? सिंध हुकूमत की भी चाहिए और वफाक की भी चाहिए, दोनों। क्योंकि जो हमारा कराची फिश हार्बर है उसको जो ऑपरेट कर रहा है, जो अंडर आता है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। अच्छा तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका जो बोर्ड्स का निज़ाम है, जो हमें यहाँ पे मुश्किलात होती हैं वो तमाम सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। सही। एक्सपोर्ट के हवाले से जो मुश्किलात आती हैं वो फिर फेडरल से हमारा लिंक हो जाता है। कौन सी मतलब वो परेशानियां हैं या क्या मुश्किलात हैं, तो वो भी इस थोड़ा सा वक्त बता देखें दें। जो सिंध गवर्नमेंट से हमारा जो सिलसिला है ना वो ये है कि कराची फिश हार्बर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सराउंडिंग्स हैं वो इतनी ख़राब है, कम से कम पिछले 15-20 साल से वहाँ पे काम नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा, सराउंडिंग्स आ जाती हैं केपीटी के अंडर। अब केपीटी से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ये रोड्स बनाना, इसको सेट करना, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करना, ये सब जो है आपका केएमसी या सिंध गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, वो इसको टैकल करेगा। वो देखिए उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि केपीटी का एरिया है, तो वो करेंगे। बस इन दोनों की जंग में हम लोग पिस रहे हैं। अब ये होता है कि आप अगर एक वहाँ का विजिट करें और अगर लोगों को दिखाएं कि क्या हालात हैं, आप जब फिशरी के जो लिंक रोड हैं जो आपके वेस्ट वास से लिंक करते हैं, जो फिशरी की तरफ जाते हैं रोड, उन रोड्स पे जब आप जाते हैं आपको ऐसा लगेगा किसी पहाड़ी इलाके में आप आ गए। अच्छा वहाँ पे यानी अगर फॉरेन बायर्स आते हैं, हमारे कोई टीमें आती हैं, हेल्थ अथॉरिटीज आती हैं बाहर की, उनको जब विजिट कराया जाता है तो शर्म से हम लोग पानी हो जाते हैं। वो लोग अंदर, यानी जब आपकी एंट्रेंस ही गंदी हो, खराब हो, आप अंदर से कितना ही सजा के रखो, हाँ सही बात तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही अगर गलत पड़ जाता है तो वो पूरे आपके किए किराए पे पानी फेर देता है। सही। तो ये मुश्किलात एक तो ये आ रही हैं। दूसरा ये है कि सफाई सुथराई का जो काम है वो कराची फिश हार्बर अथॉरिटी का है। ठीक है। वहाँ पे जो हमारी कंट्रोल करती है अथॉरिटी, वो हर वक्त अपनी फंडिंग का रोना रोती रहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास स्वीपर्स नहीं है, हमारे पास ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम इसको साफ रख सकें हार्बर को। हार्बर की सफाई मेन चीज़ है। जब आपका घर ही गंदा होगा आप किसी को कैसे बुलाएंगे, किसी को कैसे इनवाइट करेंगे? और इन्हीं वजूहात की बिना पे आप देखेंगे आज 12-13 साल हो गए हमारे पे ईयू बैन है, ईयू हमारी एक्सपोर्ट बंद है। अच्छा। इन्हीं हार्बर की वजह से। ठीक है। आप यूएसए में मुश्किलात हैं, हमें सऊदीया में मुश्किलात हैं, यानी सिर्फ सफाई सुथराई की वजह से। अच्छा। तो ये काम जो है ना ये सिंध गवर्नमेंट के काम है जो करने वाले हैं। सही। तो यानी ये मुश्किलात सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी बस समझो फाइट लगी रहती है। सही और लगे रहते हैं इनके साथ। वैसे कौन से ममालिक में हमारी मछली वो एक्सपोर्ट होती है ज़्यादातर? इस वक्त तो जो है ना मिडल ईस्ट और फार ईस्ट जो है ना वो मेन है हमारी मार्केटें। अच्छा। ठीक है। चाइना इस वक्त सबसे बड़ा बायर है, उसके बाद थाईलैंड है। अच्छा। तो हमारी तकरीबन आप ये समझें कि 50% 55% जो है ना वो चाइना एक्सपोर्ट होता है। अच्छा।
باقی 40% جو ہے 45% وہ دوسرے ممالک میں جیسے تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا, دبئی, جاپان, کوریا, سعودیہ, ان ممالک میں صحیح باقی ایکسپورٹ ہوتی ہے. صحیح. اگر EU کا بین ہٹ جاتا ہے تو پھر تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہمارے سامنے ہے. وہاں پہ ہم پھر ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اس کو کیپچر کر سکتے ہیں. پہلے ایکسپورٹ کرتے تھے وہاں؟ پہلے 2007 تک وہاں ایکسپورٹ تھی. 2007 میں جب EU کی ٹیم آئی تھی تو انہوں نے ہاربر کو فیل کر دیا تھا انہی وجوہات کی بنا پہ. اچھا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک دو دفعہ ٹرائی کی دوبارہ وزٹ کرنے کی, ری وزٹ کرنے کی, لیکن ہمارے جو اتھارٹی ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. یعنی وہ انہوں نے ٹائم مانگا, کبھی 2 سال کا ٹائم مانگا, کبھی 3 سال کا. اب یہ کہ تھوڑا ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا ہے فش ہاربر کے اندر, لیکن وہ بہت سست رفتاری کا شکار ہے, بہت سست ہے. یعنی اس کام کو یہ اینڈ آف 2020 ختم ہونا تھا, لیکن وہ اب لگ رہا ہے کہ 1 سال اور آگے چلا جائے گا جس رفتار سے وہ کام چل رہا ہے. صحیح. تو اگر وہ ڈیولپمنٹ کا کام اگر اسپیڈ سے ہو جائے تو پھر بھی ہم یہ کہ جون 2021 تک ریڈی ہوں گے ان کو وزٹ کرانے کے لیے. صحیح. تو ابھی دوسرے ممالک کی بھی ہیلتھ اتھارٹیز جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہتی ہیں کراچی فش. ویسے ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہی ہوتا ہے یا امپورٹ بھی ہوتا ہے؟ ہماری جو سی فوڈ ہے نا وہ تقریباً 98% ایکسپورٹ ہے. اچھا. 99%. only 1% جو ہے نا 1% امپورٹ ہوگا. اچھا. وہ بھی کس صورت میں ہوتا ہے؟ کوئی مطلب وہ کمی ہو جاتی ہے ہمارے نہیں, کمی نہیں ہوتی. کچھ فش جو پنجاب میں جیسے فلے استعمال ہوتا ہے, پنگاسس کا فلے ہے, اچھا, تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ نسل ہمارے یہاں نہیں ہے. ہاں وہ ہمارے یہاں نہیں ہے, وہ فارمنگ کی فش ہے, فارمنگ کی مچھلی ہے, وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ کبھی کبھار جو ہے نا اگر پنجاب میں اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ امپورٹ ہوتا ہے, ورنہ 99% ایکسپورٹ ہے ہماری. اچھا, مطلب وہاں مطلب یہاں پر اس کی فارمنگ نہیں ہو سکتی اگر ہم کرنا چاہیں تو؟ یہاں پہ ابھی کام شروع ہے فارمنگ کا نا, پنجاب میں ابھی فارمنگ ہو رہی ہے. اچھا. پنجاب میں مظفر گڑھ, لودھرا, تو پھر تو 100% ایکسپورٹ ہی ہو جائے گا. 100% ہمارا سی فوڈ جو ہے نا وہ 100% ایکسپورٹ ہے, ہماری انڈسٹری 100% ایکسپورٹ ہے. یہاں پہ لوکل بھی اتنی کنزمپشن نہیں ہے سی فوڈ کی, ہمارا تقریباً 100% ایکسپورٹ ہی ہوتا ہے. اچھا. جی. تو اگر یعنی تھوڑی سی بیک ہو نا گورنمنٹ کی, کیونکہ ابھی ہمیں کئی معاملات ہیں, مثلاً اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہماری انڈسٹری کا ہے وہ بجلی کا ہے. بجلی کا جو استعمال ہے, آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت ہمارا جو ٹوٹل کاسٹ ہے, ٹوٹل کاسٹ کا تقریباً 48% کاسٹ جو ہے نا الیکٹرک کی ہے. اچھا. اب 48% کو اس وقت جو ہے نا تمام ٹیکسز یہ وہ ملا کے ہماری جو بلنگ ہو رہی ہے وہ 23 سے 24 روپے پر یونٹ آ رہا ہے. اچھا. اور ہیوی قسم کے بل آئے ہیں. صحیح. یعنی اگر میں اپنی فیکٹری کی بات کروں, صنعتی اداروں کی بجلی تھوڑی سستی کر دی ہے. نہیں, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ دیکھیں یہ صرف جو ہے نا ایک لالی پاپ دیا گیا ہے. اچھا. ہاں, بے شک یہ اپنی طرف سے لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہماری انڈسٹری دوسری انڈسٹریز کو فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا, اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو جو بھی ہیں فائدہ ہوگا. ہماری انڈسٹری دیکھیں, اس کا اگر آپ انہوں نے جو ایک پیکیج دیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر نومبر 2019 میں آپ نے جتنے یونٹ استعمال کیے ہیں, اگر نومبر 2020 میں اس سے زائد یونٹ استعمال کریں گے تو جو زائد یونٹ ہیں اس کا 50% وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن ہماری جو کنزمپشن ہے نا وہ تقریباً منتھ ٹو منتھ سیم رہتی ہے, پر یونٹ جو کاسٹ ہے وہ سیم رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اتنا بینیفٹ ہمیں نہیں ہے. اچھا. اب آپ دیکھیں کہ 2019 کا اگر آپ بل اٹھائیں تو وہ 15-16 روپے یونٹ ہمیں پڑ رہا تھا پر یونٹ. 2020 کا نومبر آ گیا ہے, اس وقت ہمیں 23 سے 24 روپے یونٹ پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم نے اس ٹائم 1 لاکھ یونٹ استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس مہینے بھی 1 لاکھ ہی کریں گے نومبر میں, کیونکہ یہ کیچنگ سیزن کا حساب چلتا ہے ہمارا. اچھا. ٹھیک ہے, تو اس 2019 میں اگر ہم نے 16 روپے کے حساب سے پر یونٹ پیمنٹ کی, اب ہم 24 روپے کے حساب سے پر یونٹ پیمنٹ کر رہے ہیں. اتنا فرق آ گیا, اتنا فرق آ گیا بجلی کا. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے نا اور انڈسٹری جو ہے نا وہ دباؤ کا شکار ہے. اور اس وقت یہ حالات ہیں, بجلی اس وقت بڑا اہم مسئلہ ہے, اور ہمارے کم از کم 15 سے 20% یونٹ بند ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اس کاسٹ کو بیئر نہیں کر پا رہے اور ایکسپینس کو بیئر نہیں کر پا رہے. تو اس وقت کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے اور را مٹیریل کے پرائز بھی ہائی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی مارکیٹیں بہت خراب ہیں, وہاں پہ پرائز اس حساب سے نہیں مل رہے جو آج سے 1 سال پہلے پرائز ملتے تھے.
تو یہ مشکلات جو ہے نا یہ بجلی جو ہے نا بڑا اہم مسئلہ ہے اس وقت ہمارا. صحیح مطلب فائدہ نہیں ہوا جی سستی کرنے کا بجلی جو یعنی ہماری انڈسٹری کو اس کا فائدہ نہیں ہے, ہماری انڈسٹری کو فائدہ نہیں ہے. بعض انڈسٹریوں کو دیکھیں, ہماری جو انڈسٹری ہے سی فوڈ انڈسٹری, جب آپ ایک ماہی گیر جو ہے نا مچھلی پکڑتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس مچھلی جو تازہ مچھلی سمندر میں پکڑی جاتی ہے اس کو سیو کرنے کے لیے برف لگتی ہے, برف کا آئس کا استعمال ہے. وہ آئس جو پیسی جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ یہاں سے پیس کے لے جاتے ہیں. صحیح. وہ آئس پیسنے کے لیے بھی یہاں پہ الیکٹرک مشینیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا پہلا پروسیس ہی بجلی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ فیکٹریوں میں آتی ہے, وہاں پہ اس کی پروڈکشن ہوتی ہے, اس کی صفائی ستھرائی, اس کو چلر میں لگایا جاتا ہے, فریز کیا جاتا ہے, سارا بجلی کا کام ہے. ٹھیک ہے, جب فنش پروڈکٹ ہوتی ہے کولڈ اسٹوریج میں جاتی ہے, کولڈ اسٹور بجلی پہ چل رہے ہیں. جب تک وہ سیل نہیں ہوگی کنٹینر میں جائے گی, یہاں تک کہ ہمارے جو کنٹینر ہیں ریفر کنٹینر, ہمارے ریفر کنٹینر بھی دوسرے انڈسٹری کے کنٹینروں سے مہنگے ہیں. ہمارا ایک کنٹینر $2200 کا ایک کنٹینر ریفر کنٹینر آتا ہے جس کے اندر چلر لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ بڑی سے بڑی انڈسٹری آپ ٹیکسٹائل اٹھا کے دیکھ لو, ٹیکسٹائل کا کیا ہے, جب آپ نے پروڈکٹ بنا لی اس کو ایک گودام میں رکھ دو, وہاں پہ ایک بلب لگا دو, ٹھیک ہے نا, وہ فنش پروڈکٹ پڑی ہے 2 سال تک بھی پڑی رہے گی نا, اس کو کچھ نہیں ہوتا. اس کو جب آپ ایکسپورٹ کرو گے اس کے لیے کھانے کی چیزیں تو ظاہر سی بات ہے خراب ہونے سے بچنے کے لیے, بالکل, اس کو آپ ایکسپورٹ بھی وہ کریں گے نا, ان کو ڈرائی کنٹینر چاہیے. وہ ڈرائی کنٹینر $300-400 کا آتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا ریفر کنٹینر وہ $2200 کا ہے, $2000 کا آتا ہے. تو یعنی ہماری کاسٹ آپ دیکھیں کہ بڑی سے بڑی انڈسٹری پاکستان کی آپ اٹھائیں نا, اس کا آپ کمپیریزن کریں تو جتنا استعمال ہماری انڈسٹری کے اندر بجلی کا ہے کسی اور انڈسٹری میں نہیں ہے. صحیح. تو ان کو ہم نے ابھی ریکویسٹ کی ہے, پی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے ہم نے, اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ کو دیکھیں گے, ہم لوگ سنیں گے, کیونکہ انہوں نے 5 انڈسٹریاں ہیں پاکستان میں جن کو جو ہے نا ایکسپورٹ اورینٹیڈ یا زیرو ریٹڈ کیا ہوا ہے. اچھا. اس میں جو ہے نا جیسے آپ کا ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے, اس میں آپ بھی شامل ہیں, اس میں ہم نہیں ہیں. اچھا. اس میں ہم نہیں ہیں, حالانکہ ان 5 انڈسٹریوں میں سے 4 انڈسٹریاں ایسی ہیں جن کی ایکسپورٹ ہم سے کم ہے. اچھا. صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے, باقی 4 کی ایکسپورٹ ہم سے کم ہے. ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے زیرو ریٹڈ میں رکھا ہوا ہے. ان کا جو بجلی کا کاسٹ ہے وہ پر یونٹ جو ہے وہ 7.5 سینٹس یعنی $12 پر یونٹ پڑتا ہے. اچھا. ہمیں $24 یونٹ پڑتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں ان انڈسٹریوں کو نوازا جا رہا ہے جن کی ایکسپورٹ بھی ہم سے کم ہے. ہاں, اور ہماری انڈسٹری کے اندر جو ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کوئی احتجاج بھی کام نہیں کر رہا, کوئی مزاحمت, کوئی مطلب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اگر آپ احتجاج کریں گے بھی تو نہیں, احتجاج کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب تنگ آئیں گے نا تو زیادہ کیا ہوگا, فیکٹری کو تالا لگائے گھر میں بیٹھ جائیں گے. صحیح. احتجاج کر کے دیواروں سے سر ٹکرانے سے فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جب آپ ایک چیز برداشت ہی نہیں کر سکتے, آپ کو میں اگر $1,00,000 کا بل دیتا ہوں, آپ $1,00,000 بھر نہیں سکتے, تو آپ اپنے دکان کو تالا لگا کے گھر میں بیٹھ جائیں گے. صحیح. شیخ صاحب بولتا مچھی کھائیدا ہے شوق. بالکل. کیڑی مچھی کھائیدا, مچھی کی گل دی لے, ہاں کیڑی مانا کھائیدا ہے, پلو کھائیدا ہے, موراکی کھائیدا ہے, کیڑی کورڑی کھائیدا ہے, جيڪي ٻئي نالا وتا. جي مونکي لڳي خبر اثव سنڌ سان اهي شيون لاڳاپيل. مونکي لڳي تو تव्हां پلو کائيندا آهيو نه, وہ بھی کھائيندا, تري کائيندا آهيو يا ائين چاڙي ڪري کائيندا آهيو. تريل مڇي وہ بھی کھائيندا. ضروري आहे مڇي, ضروري आहे صحت لاءِ. جي بالکل. سو هاڻي بلا استاد محرم سائين ڏي وڌون ٿا. استاد وات پاڻي ٿي تو تव्हां جو مڇي تي, ها ظاهري ڳالهه आहे ته ترائي وٺون بلا سيزن جو يا گھرائي وٺون, سی جو هلي پيو الحمدلله کل نصیب تھی نه سیزن. پر मूंखे इहा ख़बर न पवंदी आहे ही कहिड़ो नस्ल आहे, पलो कहिड़ो आहे या वरी बस तव्हां वरी ईअं खाओ. बाक़ी वरी इहो आहे मच्छी आहे, टेस्ट आहे, ठीकु आहे. इहा ख़बर न पवंदी, समुंड जी आहे उहा, मूंखे ख़बर न पवंदी. इहा ख़बर कीअं पई ustad मच्छी नरो आहे या मादी आहे? सर वरी वेटा एक्सपर्ट है सर को ये बता दे ये कैसे पता चलेगा, जिन्स का पता कैसे चलेगा? نہیں وہ تو اس کے فیمیل ہے یا میل ہے, اس کے گیل اور پیٹ سے پتہ چل جاتا ہے. وہ کیسے پتہ چل رہا ہے, مطلب پتہ چل جاتا ہے یا کچھ مچھلیاں جو انڈے دیتی ہیں, ٹھیک ہے, جو تو اس سے وہ پتہ اس کے پیٹ سے پتہ چل جاتا ہے. ہاتھ لگانے سے جو ہے نا اچھا سمجھ جاتا ہے ماہی گیر, یا آپ سمجھ جاتے ہیں ماہی گیر سمجھ جاتے ہیں. اچھا استاد خبر نہ ہے پاण کیڑی تا کھاؤں پر ٹیسٹ ہوندی ہے نہ مچھی ہمارے سر وہی ہے کہ سب برابر ہے. کیونکہ وہ سو کلام ॿुधाइण ख़ुशी आहे.
हिकिड़ी ॻाल्हि जंहिंसां खाइण सां गलो ख़ुश्क थी वञे सम्झो माई आहे अच्छा ये बहुत बड़ी गल है जंहिंसां तव्हां खाई था सुकून सां चओ था हाणे बोतल बि रिलैक्स आहे उहो मर्द आहे यानी इते भी यानी मर्द मारियल आहे ये ॿियो सो हिकिड़े हमारा पुछा कई त भाई जेके साम्हूं ॿिली आहे ॿिली ऐं ॿिले में फ़र्क़ु माण्हू खे घटि ईंदो आहे चई ईअं ॿिली आहे या ॿिलो आहे ख़बर कीअं पए चई बाबा तूं हिनखे थोरो ईअं भींडो हण जेकॾहिं भॼी वई त सम्झो त मादी आहे जेकॾहिं भॼी वियो त सम्झो मर्द आहे साईं उहो ई मिसाल ॾिनो आहे जेका ख़ुशबू हुजे सम्झो अच्छा वरी जानवरनि में जो है ना जानवरनि में सर जानवरों में जो है ना ये ज्यादातर जो है ना फीमेल पालती है मेल को हालांकि कि शेर जो है तो पान शिकार रखो तो खबर हुई शायद शिकार नहीं करता शेर नहीं करती शिकार सर और वो सबसे पहले शेर के लिए फिर जो है ना रास्ता बनाते वो आगे खाता है उसके बाद वो खाती है सर नर और मादा पे बात हो रही है जी हाँ बिल्कुल आप तो समझ रहे हैं में बात करें समझ आती इसलिए मैंने मतलब वो आसानी के लिए मेल फीमेल का इस्तेमाल किया तो शायरी में जो कमाइण में मेहनत में मर्द वीचारो पर फोके तला मर्द उस्ताद जेतिरो ॻाल्हाईंदे कलाम में वक़्तु कटिजी वेंदई सर मां हर रोज़ वेठा हुआ वधीक तुंहिंजी मर्ज़ी अल्लाह ख़ैर करे जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी नाम जिसने भी मोहब्बत का खुदा रखा है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है जब से तूने
مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر پی جائے ایام پی جا پی جا پی جا پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. واہ 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 مزو اچھی ہو جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. سو ناصر کاظمی صاحب جو خوبصورت کلام استاد مرم ناز جی آواز میں ٻڌوسي ننढी साई वठूं था जल्दी मोटी अचूं था. तव्हां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध शहानी है अमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. रोज़ानी जी जल अख़बार अॼु चवे पई त अॼु ख़मीस जो ॾींहुं आहे 5 नवंबर 2020 बमुताबिक़ 14 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी. सिफ़ा 8 क़ीमत 20 रुपया आहे इन अख़बार जी. ऐं हुकूमत जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ खे गैर क़ानूनी तरीक़े सां हटाइण जी कोशिशि कई. सुप्रीम कोर्ट जो इख़्तिलाफ़ी नोट अची वियो आहे जेका सुपर लीड ख़बर आहे अॼोकी अख़बार में. ऐं अमरीकी सदारती चूंडुनि में 9 चोटीअ जो मुक़ाबिलो. बाइडन खे सरसी. ट्रंप पारां धांधली जो इल्ज़ाम. अदालत वञण जो ऐलान. इन खां सवाइ ॿियूं बि कराइतियूं ख़बरूं आहिनि ऐं शोबिज़ जूं ख़बरूं बि आहिनि अॼोकी अख़बार में. अमिताभ बच्चन बि भारती हिंदू इंतहा पसंदनि जे निशाने ते अची वियो आहे. ऐं जावेद अख्तर कंगना रनावत ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे छॾियो आहे. ऐं अमरीका में पहिरियों भेरो हिकु खदड़ो फ़क़ीर सेनेटर चूंडिजी वियो. इहा अॼोकी अख़बार में ख़बर आहे. सो ॿियूं ख़बरूं पढ़ण जे लाइ या वरी ख़ासि तौर ते जीजल जा जेके सितारा आहिनि उहे पढ़ण जे लाइ तव्हां रोज़ाने जीजल अख़बार ज़रूरु पढ़िजो. सो असां सां जेके मौज़ महिमान आहिनि मोहम्मद ज़फ़र कुंडी साहिबु ऐं इम्तियाज़ अली शेख साहिबु गॾु आहिनि. कचहरी कयूं पिया. फिशरीज़ खाते जे हवाले सां कचहरी थिए पई ऐं सहाफ़त जे हवाले सां कचहरी थिए पई. कुंडी साहब इमरान खान साहब से हाल ही में आपकी मुलाकात हुई है. 2 मरतबा मेरे ख्याल से मिले हैं. किन मामलात पे डिस्कस हुआ. असल में क्या फ़ायदा हुकूमत देने वाली है फिशरीज़ डिपार्टमेंट को. उसमें क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी एसोसिएशन के जो सरबराह थे उनको बुलाया था. तो फिशरी से मैं गया था वहाँ इस्लामाबाद. अच्छा अच्छा. तो वहाँ पे जो उनका मकसद था मेन मकसद ये था कि एक्सपोर्ट को किस तरह इंक्रीज़ किया जाए. सही सही. हर इंडस्ट्री से सवाल जवाब हुए और पूछा गया कि अपनी अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताओ किस तरह जो है ना एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है. सही सही. तो हमने अपनी सजेशन वहाँ पे दी थी. तो मुख्तलिफ सजेशन दी थी और जो तकालीफ है हमें वो हमने उनके सामने रखी थी. अच्छा. कि आप अगर ये चीज़ें जो है ना हमारे मसाइल हैं ये अगर हल हो जाए और इन शोबों में काम किया जाए तो हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो 2 से 3 गुना बढ़ सकती है. सही सही. तो इस वक्त जैसे 99% आपने कहा कि हो रही है. एक्सपोर्ट तो हो रही है लेकिन इसको हम बढ़ा सकते हैं. यानी
اس کا والیوم بڑھا سکتے ہیں, کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی تو سمجھو ہم جتنے بھی سی فوڈ ایکسپورٹر ہیں نا, وہ سمجھو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں, یعنی گورنمنٹ کی کوئی اس وقت بیک نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں, جیسے میں نے مین مسئلہ بجلی کا کہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اس قسم کے جو ہرڈل ہیں ہمارے یہاں, کوئی کسی شعبے میں سی فوڈ کو سبسڈی نہیں دی جاتی. اچھا. ہر انڈسٹری کو کسی نہ کسی شعبے میں سبسڈی ملتی ہے, ہمیں کسی بھی شعبے میں سبسڈی نہیں ملتی. اچھا, ٹھیک ہے. یہ مسئلہ بیان کیا آپ نے وہاں پر؟ ہاں, وہاں پہ بیان کیا ہے. صحیح. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے نا, ہم اگر آپ دیکھیں نا, آپ سی فوڈ ایکسپورٹر سے ملیں گے تو آپ بولیں گے یار یہ تو سارے مجاہد ہیں, جہاد کر رہے ہیں. یعنی یہ تو ہم لوگ جو کر رہے ہیں, لڑ رہے, اپنی مدد آپ کے تحت سب کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اگر آپ ویسے ماہی گیر کا یا ملازم کے گھر کا چولہا ٹھیک طریقے سے جل جاتا ہے, گزارا ہو جاتا ہے؟ جو گزارا تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, سب کا ہو جاتا ہے گزارا. لیکن اگر آپ نے اپنے ملک کی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, اس کو اور آگے لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ مین کمپٹیٹر جو ہے نا انڈیا ہے, آپ کا پڑوسی ملک, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک تو ان کے پاس ہاربر بھی زیادہ ہے, ایریا زیادہ ہے, سمندر زیادہ ہے, تو ان کی ایکسپورٹ جو ہے نا وہ کئی گنا آگے چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ ان کے کمپٹیشن میں چل رہے ہیں. صحیح. اور جن مارکیٹ میں ہماری اپروچ ہے, بھارت کی ایکسپورٹ زیادہ ہے ہم سے. بھارت کی ایکسپورٹ اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے پاس ایک تو سمندر زیادہ ہے, اچھا, ہاربر زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا ان کی گورنمنٹ کی سپورٹ ان کو سبسڈیز وغیرہ ہر چیز میں دی جاتی ہے. اچھا. تو اس سے جو ہے نا ان کی ایکسپورٹ ہم سے سی فوڈ کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے فارمنگ میں بہت کام کیا ہے, جس میں شرمس فارمنگ مین جو ہے, شرمس فارمنگ جس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے. اچھا. تو شرمس فارمنگ وہاں بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں شرمپ فارمنگ ہے ہی نہیں, زیرو ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی کمپنیوں کو را مٹیریل چاہیے نا. مثلا کچھ ایسے مہینے آ جاتے ہیں جب سمندر میں مچھلی شارٹ ہو جاتی ہے, جھینگا شارٹ ہو جاتا ہے, تو ان مہینوں میں آپ کی فارمنگ کا جو جھینگا ہوتا ہے وہ آپ کی فیکٹریوں کو رن کرتا ہے. اچھا. پروڈکشن آپ کی چلتی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ رکتی نہیں ہے. صحیح. تو مچھلی کے علاوہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ بھی بتا دے چلیں, سی فوڈ میں کیا کیا ایکسپورٹ ہوتا ہے؟ سی فوڈ میں تو دیکھو, ایک تو مچھلی ہو گئی, جھینگا ہو گیا, جھینگا, مچھلی, کریبز, لابسٹر, یعنی ہر چیز جو سی فوڈ میں آ جاتی ہے ہر چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے. اچھا. جی. کیونکہ دوسرے ممالک میں کھانے والے زیادہ ہیں. جی. مچھلی کے علاوہ بھی ہم لوگ تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ گوشت خور لوگ ہیں. صحیح ہے نا, پاکستانی قوم جو ہے وہ گوشت خور ہے. یعنی آپ چکن, میٹ, اس پہ جو ہے نا ہم لوگ, یہ روزانہ بھی پکے گا نا ہم کھائیں گے. صحیح. اور سی فوڈ اگر ہفتے میں ایک دن پک جائے گا نا وہ بھی بڑی بات ہے. صحیح. اور ایسے گھرانے بھی ہیں, آپ کو پتا ہے, مہینے میں بھی جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے ایک دن سی فوڈ پکتا ہوگا, کیونکہ ہم لوگ سی فوڈ ایٹر قوم نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا وہ گوشت خور قوم ہے. میٹ, چکن, اس پہ ہمارا شکر ہے اللہ پاک کا, گوشت خور ہیں, حرام خور نہیں ہے. صحیح. تو یعنی یہ دوسرے ممالک میں تو جاتے ہیں ساری چیزیں, وہ تو آرام بھی کھاتے ہیں. دوسرے نہیں, وہ تو دیکھیں ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ سی فوڈ لیکن ایکسپورٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں, وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم نہیں کھاتے. جو ہم نہیں کھاتے, جیسے کریب ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا, وہ سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. صحیح. چائنا میں ایسی فشز ایکسپورٹ ہوتی ہیں جو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے, ہم لوگ نہیں کھاتے. صحیح. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ تقریباً تمام ایکسپورٹ ہوتی ہیں, باہر جاتی ہیں. صحیح. ہمارے ادھر تو مخصوص آئٹم ہے فش میں بھی, جیسے پاپلیٹ ہو گیا, آپ کا سرمئی ہو گیا, ہیرا مچھلی ہو گئی, یا جھینگا. اچھا, ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ سمندر کی مچھلی ہوتی ہے یا دریا کی بھی ہوتی ہے ایکسپورٹ؟ دریا کی بہت کم ہے. یعنی ٹوٹل ایکسپورٹ کے اندر اگر ہمارا دریا کا شیئر دیکھا جائے تو وہ 5% بھی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں دریا کی مچھلی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, دریا کی مچھلی ہے. ہمارے یہاں جو ہے نا دریائی مچھلی کی لوکل کنزمپشن زیادہ ہے. اچھا. دریائی مچھلیاں جو ہے نا, جتنی ڈیمز, جو براج ہیں, ڈیمز ہیں یا دریا ہے, نہریں ہیں, ان کی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر لوکل اپنے ملک کے اندر اس کی کنزمپشن زیادہ ہے. صحیح. تو ایکسپورٹ میں اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. اگر وہ ایکسپورٹ میں ان کا شیئر ہوگا تو 3 سے 5% تک ٹوٹل ایکسپورٹ میں اس مچھلی کا شیئر ہے. باقی 95% جو ہے نا وہ میرے خیال سے وہ تو دریائی مچھلی ہوتی بھی کم ہی مقدار میں ہوگی, کیونکہ کم مقدار میں, سمندر تو بہت بڑا ہے, دریا تو چھوٹے چھوٹے ہیں. جی. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ نا پنجاب, KPK میں یا اندرون سندھ میں جتنے بھی نہریں, دریا وغیرہ, ان کی مچھلی انہی علاقوں میں جو ہے نا زیادہ تر اس کی کنزمپشن ہوتی ہے. لاہور, راولپنڈی, پشاور, کوئٹہ, وہاں دیکھیں تو یہ زیادہ تر جو ہے نا دریائی مچھلیاں ہی استعمال ہوتی ہیں, سیل ہوتی ہیں. تو سمندر کی تقریباً تمام مچھلی جو ہے نا 95% تو ساری ایکسپورٹ میں چلی جاتی ہے.
और 5% जो है ना दरियाई मछलियाँ एक्सपोर्ट में उसका शेयर आ जाता है। थोड़ा सा समंदरी हुदूद के बारे में भी इल्म देते चलें कि क्या होता है, कैसे माहीगीर जाते हैं, किस स्टाइल में वो मछली पकड़ते हैं और कहाँ तक हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा बता दें। कभी कभार देखते हैं कि भाई माहीगीर वो फंस गए, दूसरी मतलब किसी दूसरे मुल्क की हुदूद में चले गए, वहाँ पर मसला हो गया। नहीं, असल में यहाँ पे जो है ना जो प्रोविंस और जो फेडरल है उसकी हदूद हैं समंदर में, ठीक है। जो हमारे लोकल माहीगीर हैं जैसे सिंध के लोकल माहीगीर हैं, ठीक है, इनके लिए जो हदूद तय की गई है समंदर में वो 12 नॉटिकल माइल तक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, 0 से 12 नॉटिकल माइल तक वो जाके शिकार अपना कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, फिर 12 से 20 नॉटिकल माइल तक जो है ना बफर जोन आ जाता है। मतलब कोई काशंस वगैरह है, कोई सिग्नल वगैरह है, कोई कुछ लगा हुआ है, माहीगीर को पता कैसे चले? माहीगीर को आईडी है उस जगह का, जहाँ तक वो जा सकते हैं उनको पता है कि यहाँ तक हमारी लांचें, हमारी बोट्स जो है ना जा सकती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी मौजूद रहती है समंदर में, वो भी इंडिकेट करती है, उनको इशारे बताती है। सही। फिर उसके बाद 12 से 20 तक जो है ना बफर जोन आ जाता है। अच्छा। बफर जोन वो एरिया होता है जिसमें यानी प्रोविंस और फेडरल दोनों की इंटरफेरेंस होती है। अच्छा अच्छा, यानी प्रोविंस की जो बोट्स हैं अगर बफर जोन में चली जाती हैं तो वो भी शिकार कर सकती हैं, या फेडरल का कोई जहाज़ है उसमें आ जाए तो वो भी आ सकता है। अच्छा। फिर 20 नॉटिकल माइल के बाद फेडरल का एरिया शुरू हो जाता है जो कि 300-350 नॉटिकल माइल तक चले जो गहरा समंदर है। अच्छा, गहरा समंदर है, उसमें जो है ना ये हमारी छोटी बोट्स जो है ना वो नहीं जा सकती, यानी उस पानी के अंदर उस गहरे समंदर में ये नहीं जा सकती, उसके लिए बड़े वेसल चाहिए होते हैं, बड़े जहाज चाहिए होते हैं। सही। तो ये समंदर को डिवाइड किया गया है अच्छा अच्छा, इन एरियाज के हिसाब से। और हमारी जो बोट्स हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है जो बनी हुई हैं तो वो बोट्स ज़्यादा 20 नॉटिकल माइल तक जा सकती हैं, उससे आगे नहीं जा सकती। इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी बोट्स को गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अगर माहीगीरों के साथ मिल के इन बोट्स को अपग्रेड करे और इनको लॉन्ग लाइनर की तरफ ले जाए, तो फिर ये गहरे समंदर में भी जाके शिकार कर सकते हैं। मतलब वो बोट्स मतलब इतनी मजबूत नहीं है, इतनी मजबूत नहीं जो गहरे समंदर में जा सके। लेकिन अभी कुछ बोट्स बन रही हैं पाकिस्तान में, अच्छा, जो इस लेवल की हैं कि जो आगे गहरे समंदर में भी जा सकती हैं। लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अगर थोड़ा माहीगीरों के साथ सपोर्ट करे, उनको इजी कर्जे दे विदाउट इंटरेस्ट के यहाँ, और वो अपने उस काम में लगाएं और अपनी बड़ी बोट्स और मजबूत बोट्स बनाएं जो गहरे समंदर में ना सिर्फ शिकार कर सकें बल्कि उसके अंदर ऐसे चिलर लगे हों बोट्स के अंदर जो उसको प्रिजर्व कर सकें, जो भी फिश पकड़ें जो भी उसको उसी टाइम जो है ना उसको फ्रीज कर सकें समंदर में। तो वो उसी क्वालिटी फ्रीज होने का कोई बंदोबस्त नहीं है अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, फिलहाल पाकिस्तान में जितनी भी बोट्स हैं ना वो सिर्फ रॉ मटेरियल जो है ना पकड़ के और लाती हैं, जहाँ पे यहाँ पे आपका समझो इनलैंड फ्रीजिंग है सारी, जो प्रोसेसिंग प्लांट्स में जाके फैक्ट्री में पूरा सारा सिस्टम होता है, पूरा फैक्ट्रीज के अंदर पूरा सिस्टम होता है। सही। जी। फैक्ट्री के अंदर जो काम करते हैं वो भी माहीगीर कहलाते हैं या अलग से? नहीं, वो फैक्ट्री के अलग लेबर होते हैं। अच्छा, अलग लेबर होते हैं, क्योंकि माहीगीरों को तो पूरा तजुर्बा है। जी, वो तो माहीगीरों का तो ये है ना कि आपका जो कश्तियों के अंदर या बोट्स के अंदर जो उसको कैसे पकड़ना है, कैसे सेव करना है मछली को, किस तरह किनारे तक लेके आना है, सही से उनका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है ना फैक्ट्रीज का काम शुरू हो जाता है। सही। वहाँ पे ऑक्शन हाल से परचेज करना, फिनिशिंग वगैरह पूरा, बिल्कुल उसको फैक्ट्रियों में लाना, मछली को खूबसूरत बना के भेज देते हैं, बनाना, उसको सफाई सुथराई करना, पेट साफ करना उसका, अच्छा, उसको फिर फ्रीज करना, ब्लॉक बनाना। अच्छा, समुद्री आलूदगी की वजह से भी कुछ मछली कम मतलब वो आ रही है क्या? सुनते हैं कभी कभार के आलूदगी ज़्यादातर मतलब समंदर में नुकसानदायक? नहीं, असल में इतना उसके असर फैक्ट्रियों का सारा वो पानी जहरीला सारा सिस्टम, ये जो है ना ज़्यादा असरात जो है ना किनारों पे होते हैं। अच्छा। गहरे समंदर में इतने असरात नहीं है इसके। अच्छा। जो साहिल होता है, किनारे होते हैं, किनारों पे इसके असरात होते हैं। अच्छा। तो हमारा जो सी फूड है ना वो समझो समुद्र के बीच में या बिल्कुल वो जैसे 12 नॉटिकल माइल 20 नॉटिकल माइल वहाँ पे जाके शिकार होता है। अच्छा। किनारों से ये शिकार नहीं होता। सही। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हमारी उस क्वालिटी में किसी चीज़ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सही।
تو اس کا اتنے اثرات نہیں ہے ہمارے اس پہ اثرات, لیکن کناروں پہ جو ہے نا, کناروں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. صحیح صحیح. لیکن ہماری جو سی فوڈ انڈسٹری ہے, وہ جتنی بھی مچھلی آتی ہے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے, وہ ساری گہرے سمندر سے آتی ہے. اچھا اچھا. تو اس وجہ سے اس پہ ہمارے اتنا اثرات نہیں ہیں. زیادہ تر مطلب سب سے ٹاپ لسٹ پہ کون سا ملک ہے جو ایکسپورٹ ہماری لینا چاہتا ہے, یا جہاں پر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ اس وقت تو چائنا ہے. چائنا سب سے اس وقت چائنا سب سے زیادہ ہے. اچھا اچھا. بہت بڑا ملک ہے, اور وہاں پہ جو ہے نا آبادی بھی بہت زیادہ ہے اس کی, اور اس کی ریکوائرمنٹ پوری دنیا سے وہ امپورٹ کرتا ہے چائنا. اچھا. تو پاکستان بھی زیادہ تر جو ہے نا اس وقت 50-55% جو ہے نا وہ چائنا ایکسپورٹ کرتا ہے. صحیح. چائنا اس وقت مین مارکیٹ ہے. صحیح صحیح صحیح. شیخ صاحب تव्हां ॿुधो था न ॻाल्हियूं? जी जी बिल्कुलु में साईं. हाणे मतिलबु छा तव्हांजो इरादो आहे त को कजे पाण बि जेको आहे मच्छी बची का माना कारोबार कयूं? बिल्कुलु कारोबार ॾिसो था, इंडस्ट्रियूं परेशान वेठियूं, पाण इंडस्ट्रियल वेठो आहे, उहो ई चए थो त गवर्नमेंट मां मायूसी आहे, काई बि जंहिं माण्हूअ खां पुछो उहा मायूसी आहे. पर चवनि था त गवर्नमेंट कहिड़ी बि हुजे, साफ़ीअ खे का मायूसी आहे ई न. उहो न सायूं, हाणे हिन हुकूमत में सभ खां वधि साफ़ीअ खे मायूसी आहे. जी सभ खां वधीक. सही सही सही. सभ खां वधीक जंहिंखे आख़िर में को मैसेज डिग्रेड कयो वियो आहे उहो साफ़ीअ खे कयो वियो आहे. मैसेज को ॾींदो तव्हां को सुहिणो को जेको यादि रहे? मैसेज इहो ई आहे त असां सभिनी सां हिकु जहिड़ो सलूक कयूं. अच्छा. साईं चयो त असांजी इंडस्ट्रीअ खे डिग्रेड कयो वियो आहे. हा हा. ॿियनि कुझु इंडस्ट्रीज़ खे फ़ाइदो आहे हिन मां. बिजली वारी ॻाल्हि तव्हां कई, सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि त जेका बि हुकूमत अचे थी न, पहिरियों त पंहिंजे दोस्तनि खे ऐं परस्तारनि खे ख़ुशि करे थी. सही सही. हर सियासतदान सां गॾु इंडस्ट्रियल आहिनि. सही सही. दोस्त बि आहिनि त यार बि आहिनि. सही. त पहिरियों त उन्हनि खे नवाज़ियो थो वञे. सही. हाणे तव्हांजो मैसेज कहिड़ो आहे इहो ॿुधायो? मैसेज इहो आहे त हिकु क़ौम थी रहो. सही. प्यार मोहबत में रहो. वाह वाह. चाहे घर में रहो चाहे ॿाहिरि रहो. इहा ॻाल्हि भली. मुफ़ाद परस्ती ख़तमु कयो. सही सही. क़ौम परस्ती ख़तमु कयो. हिकु क़ौम थियो. पाकिस्तान जो नालो हुजे. पाकिस्तान क़ाइमु हूंदो त असां हूंदासीं. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. सही से. आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे कुंडी साहब आप भी? जी जी, मैसेज सिर्फ ये देना खासतौर पे उनके लिए जो कुंडी लगा के मछली पकड़ते हैं. जी जी. ये बीच में आ जाते हैं खामखा. बिल्कुल नहीं, असल में जो पॉलिसियाँ थी ना, जो पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ चली आ रही थी, ठीक है ना, तकरीबन पॉलिसीज़ तो वही कंटिन्यू चल रही हैं. अच्छा. ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है. हर्डल हैं, आपको पता है कि हर जिस शोबे में हाथ डालते हैं, जिस जगह जाते हैं, करप्शन, हर्डल या गलत पॉलिसियाँ चल रही हैं. सही सही. तो उनको टैकल करने में टाइम तो लगता है. सही सही. यानी गवर्नमेंट की नीयत अच्छी है. अच्छा. अगर देखा जाए तो, अगर नीयत देखी जाए तो उनकी अच्छी है. गवर्नमेंट चाहती है कि हुकूमत हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, हर शोबे में बढ़े. सही सही. लेकिन मुश्किलात हैं. आपको पता है अपोजिशन, ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपोजिशन में हैं. आप देखें पिछला दौर गुजरा है, तो पिछले दौर में जो नवाज लीग की हुकूमत थी, उन्होंने अपने लोगों को नवाजा है. ठीक है ना. सही. और तो मतलब नीयत पे शक नहीं किया जा सकता. नीयत पे शक, गवर्नमेंट की अल्लाह बेहतर करेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि आप उम्मीद के सहारे पे ही चलते हैं. सही. बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़फ़र कुंडी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. शेख साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा क़ीमती वक़्तु सीड़ायो तव्हां. ऐं मोहरम साईं, तव्हां खां आख़िर में कलाम ॿुधंदासीं. मैसेज उन में ई तव्हांजो हूंदो. वॾी महिरबानी तव्हांजी बि, तव्हांजो क़ीमती टाइम असांखे ॾिनो. तव्हांजी वॾी महिरबानी जिन जेको प्रोग्राम ॾिठो पिया. हयाती बख़ैर. सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी तव्हांजी ऐं असांजी. सो मोकिलाणी खां पहिरियां वरी हिकिड़ी गुज़ारिश कंदासीं त पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, ऐं ख़्यालु रखिजो उन्हनि जो बि जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे. सो जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली सदाईं गॾु. अल्लाह वाही. जी साईं. जे रोज़ रुसंदे, जे रोज़ रुसंदे त मेणा मिलंदा है, मेणा मिलंदा. ओड़े पाड़े वारा माण्हू तोता मुता खिलंदा. जे रोज़ रुसंदे, जे रोज़ रुसंदे त मेणा मिलंदा है, मेणा मिलंदा. ओड़े पाड़े वारा माण्हू तोता मुता खिलंदा. ओड़े पाड़े वारा माण्हू तोता मुता खिलंदा. जे रोज़ रुसंदे, जे रोज़ रुसंदे.
घणी ॻाल्हि तां न रुस जानी है रुस जानी थोरी घणी ॻाल्हि तां न रुस जानी है रुस जानी तुझी नौकरी ॾिबी सॼी ज़िंदगानी तुझी नौकरी ॾिबी सॼी ज़िंदगानी जे रोज़ रुसंदे जे रोज़ रुसंदे त महणा मिलंदा है महणा मिलंदा ओड़े पाड़े वारा माण्हू तोता मुद्दा खिलंदा ओड़े पाड़े वारा माण्हू तोता मुद्दा खिलंदा जे रोज़ रुसंदे जे रोज़ रुसंदे वास्ते खुदा जे मूंखे माफ़ कर तूं है माफ़ कर तूं वास्ते खुदा जे मूंखे माफ़ कर तूं है माफ़ कर तूं है माफ़ कर तूं कट गैर दिल मां दिल साफ़ कर तूं कट तेरे दिल मां दिल साफ़ कर तूं जे रोज़ रुसंदे जे रोज़ रुसंदे त महणा मिलंदा है महणा मिलंदा ओड़े पाड़े वारा माण्हू तोता मुद्दा खिलंदा ओड़े पाड़े वारा माण्हू तोता मुद्दा खिलंदा जे रोज़ रुसंदे जे रोज़ रुसंदे त महणा मिलंदा है महणा मिलंदा ओड़े पाड़े वारा माण्हू तोता मुद्दा खिलंदा जे रोज़ रुसंदे जे रोज़ रुसंदे जे रोज़ रुसंदे सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घरे थो खुशहाली ऐं अमन जो टे पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध